Hello, good afternoon. Please have your seat. Okay, in the last session, we spoke about the important PT themes where we have looked upon the aspects of the ecosystem related things. Specifically, we have spoken about the corals, mangroves, etc. In today's class, we will speak about two major things. Number one, the thematic aspects of pollution. What all important aspects have been there in current affairs, the aspects of that, and then the global climate change. And climate policies. This year, between May to December 2024, if we look up to, there are important aspects in this global climate change, or even in pollution if we speak about. Then pollution related to heavier metals, specifically in water bodies, they have been there and it has been creating continuous current news, etc. Then the problems associated to plastic waste and the microplastic has been spoken of in current affairs. The global plastic treaty has also been into news. That creates a theme regarding the pollution related aspects. Apart from this, we have spoken about the stubble burning, the air pollution related aspect, then the air pollution laws in India specifically, they have been into news. As far as if you look up to the climate change related aspects, then the major themes that we can find this year as far as the current affairs has been considered. The first and foremost aspect, the climate change and the impacts on glaciers. Specifically, the permafrost related aspect, the thawing up of the permafrost, and the overall vegetation in polar areas. That has also been into news. So understanding the overall impact of climate change over the, we can say, the Arctic regions has been there. Then the Paris Agreement under the Kyoto Protocol and the related aspects of it, the overall development, specifically climate financing and the carbon financing has been into news, and aspects related to this, and then the relative aspects of COP29, which was there in November 2024, is also something that can be taken into the major themes that we can find over here. Apart from this, with climate change itself, the loss and damage has also been spoken of, with the aspects of loss and damage fund coming into from COP28 also. Plus, this year, the events of forest fire have been higher. So understanding those and the understanding of green buildings, which would define the major theme related to the climate change and climate change related aspects and the policies that we will find this year, right? So what we are trying to do is we are trying to bring up the major themes related to current affairs. Exactly reading current affairs may not be important, but understanding the holistic theme of that, because that would link the current and the basic all together, right? And which is the most important theme, or which has been spoken of at a large, can be something which would be more directed towards the question that can be asked in PT, right? If you look up to the last year's PT paper also, or the previous year papers also, the questions have been more surrounded to not only to a particular current affairs, but rather to a theme.
to a particular aspect of that current affairs, right? So if we understand this thing, these things that were left in the last class, we'll understand those first, right? The overall air quality regulation in India that we can see. In India, the conservation of the air quality has been spoken of with 1974 establishment of Central Pollution Control Board. Before this, in 1972, there was the Water Act which came into being, and with the Water Act itself, in the year 74, Central Pollution Control Board and relatively state pollution control boards were established. The overall emphasis of Central Pollution Control Board was to create guidelines regarding the pollution control, be it be water, be it be air. The guidelines regarding the control of pollution in India has been created by CPCB, which are then implemented by the state pollution control boards respectively in every particular state, right? After that also, in the year in the year 1981, CPCB has came up with the Air Prevention and Control of Pollution Act, right, which got implemented since 1983 in the country. And Air Prevention and Control of Pollution Act becomes the umbrella policy or the circumference policy under which all the regulations relative to control of pollution in the country have been created, right? Post that, in 1986, we can also see that there was implementation of Environment Protection Act, which has also emphasized over control of pollution as well. So in India, the control of pollution in the air has been directed from the Air Act of 1983, and then by 1986, the Environmental Pollution Act. Later on, in 1998, we have created the National Ambient Air Quality Standards, and in 2009, a National Ambient Air Quality Standard criteria was created. Now, overall, if we look up to the air prevention in the country, there are three aspects of air prevention. Number one, control of pollution. In control of pollution, there could be two aspects. Number one is monitoring the pollution. The monitoring of pollution is being done by, and the second aspect of control of pollution would be creating standards. Of air quality. The monitoring of the pollution is being done by establishment of ambient air quality monitoring stations. Right, and the standards for air quality in the urban areas as well as later in the rural areas, in the industrial areas also, has been established by Central Pollution Control Board, which relatively is been implemented by Central State Pollution Control Board by the Air Act of 1983. The ambient air quality standards have been taken up since 1998 by the Air Quality Index. The Air Quality Index were the static index. We would say static index in a sense that they were created for monitoring up of the air every 15 days or every fortnightly, right? They would monitor the urban air, they would monitor the rural airs also. In fact, for the rural air, there was no monitoring station which was established. Right, earlier they were all the mobile monitoring stations which were established under the air quality index of the country, right, which was monitoring onto volatile organic carbon, oxides of nitrogen, sulfur dioxide and particulate matter, specifically particulate matter 10, and nothing below this, right? Now, since 2014, we have established the National Air Quality Index, NAQI, which is Continuous Air Quality Monitoring Station.
Continuous air quality monitoring station would mean that it is a 24/7 running operation where we constantly monitor the air in urban areas. Specifically right now, initially it was available in 49 cities. The target of Government of India is to establish this in 120 cities. Also, the non-attained cities which were not being taken up earlier, they are also being taken up right now for monitoring. This is also expanding for rural area monitoring as well. The government is trying to bring it up, right? Under the National Air Quality Monitoring Station, we are monitoring volatile organic carbon, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, particulate matter 10, particulate matter 2.5, ammonia, ozone. These are the major pollutants which are being monitored constantly in the urban air, right? So using this, the NACI itself, NACI became the initial monitoring aspect of or initial aspect of controlling the pollution itself. Say we always see that okay, fine, it has been graded between 0 to 500, the index, and different categories have been pointed into that. 0 to 50 is very good air or very healthy air, 50 to 100 is okay or good air, then 100 to 150 is moderate, or 150 to 200 starts to become unhealthier, then 200 to 300 becomes polluted, 300 to 350 severely polluted, 400 reaching up to a severe condition, then 500 would be something where the air quality has been deteriorated completely, right? So this NACI starts to give us the index guidelines also. It helps us in identifying what is the air quality in any particular area, and it will also help us to define what steps that can be taken up in controlling the air pollution in any particular area. So the second aspect of we can say the regulations which are being created in India is to lay down air quality maintenance, and also to come up with that we have created the National Clean Air Program. First drafted in 2018, National Clean Air Program is an umbrella policy. Under the National Clean Air Program itself, the Air Act of 1983 would define the standards of clean air. Under the National Clean Air Program itself, we will also have the National Air Quality Index functioning, which is continuous air quality monitoring station all across the country, approximately 121 urban and then rural monitoring stations are also being established under the National Clean Air Program itself, right? They have taken non-attained cities also, the cities which were not being attained earlier or the air quality was not being attained earlier. We have started monitoring the air quality and controlling the air quality in the non-attained cities also, which become the tier 2 and the tier 3 cities of the country also under this program. Under the National Clean Air Program only, we create policies which are there. If the pollution in any particular area increases beyond a particular limit, then immediate actions are also being taken up. Like in Delhi and NCR, we have the graded response action plan, which has been established, which becomes the GRAP. Right? Different stages of GRAP have been expanded. We look up to these standards also. Then under the National Clean Air Program only, we have also created an inventory of pollutants.
what different types of pollutants are being created and what immediate actions are required in urban and rural areas. What actions are being required in a short term, what actions are being required in a longer term has been taken up under the National Clean Air Program of 2018 only, right? Right? So NCAP right now would be holistic policy which will cover everything relative to the air pollution and air pollution monitoring. So where we have the National Clean Air Program. Under the National Clean Air Program, we have guidelines for indoor pollution which are being created. Then city specific plan for 100 polluting cities. This has been increased to 121 now. Public participation on planning and implementation have been taken up. These resource appointment studies and set up a national inventory of the pollutants regarding what different types of pollutants are seen in which different areas. Like in Punjab and Haryana, if the pollution of the air is more because of crop stubble, then the type of pollutants would be different. Then the type of pollutants in Kanpur, then the type of pollutants that may be present in Vizag or in Hyderabad, the type of pollutants in any particular area and the causes of those pollutants have also been taken into that particular inventory that helps to create a register of things which are there. Okay, fine, this is the thing, this is the problem. If this problem is solved, we can create a long-term strategy. So using the National Clean Air Program itself, the third thing that comes into is creating a long-term strategy. So three things we do. Number one, we help in controlling the pollution. Then we help in creating a air quality monitoring, and then we helps to create a long-term strategy towards maintenance of ambient air in the country, right? So in this way, if we look up to the pollutant monitoring which has been done like this, NACI has taken up various color gradings right now according to different color. The 24/7 monitoring of the pollutants has been done, and then public participation is also being taken up immediately. We direct this information to public and we urge the public for taking necessary actions also, or incorporating the actions which are being taken up by the governments also, right? Then there are multiple things like GRAP, etc., which have also been introduced this year. GRAP is Graded Response Action Plan, which is a localized plan for Delhi NCR. Specifically, this comes into force if the air quality in this particular area goes beyond, or the air index goes beyond 200 plus. If this comes into, then the GRAP action plan or the Graded Response Action Plan is being enforced in the city. Like it is being enforced in 4 different stages. Stage 1, when the air quality index is between 200 to 200, between 201 to 300, right? When the mechanized sweeping of and washing up of the road starts, right? We usually see this right now. Abhi to, theek hai, enforcing ban on firecrackers, increased scrutiny of the vehicles for pollution standards, and then large unregistered C&D sites, construction and demolition sites can be shut if the pollution is higher. Then stage 2 is when it is between 300 to 400. Dust control measures are being taken up. Free parking to surge by parking fee to surge by 3 to 4 times. That demotivates the commuters also to use their vehicles. They stop the use of coal or the firewood in the eateries. They start using more sustainable fuel methods also. And augmenting the frequency of CNG and the electric buses in the metro services. That is being taken up generally. In general, the stage 1 and stage 2 remains enforced in Delhi and NCR, Graded Response Action Plan, because we are creating a long-term strategy for reducing pollution in Delhi and NCR. Stage 3 comes in when the index goes beyond 400. When we start barring the BS3 petrol and the BS4 vehicles, diesel vehicles from the road, the government takes decisions on shutting the primary schools. Ban on the essential construction works have also been done in Graded Response Action Plan grade 3. In grade 4, we ban the entry of diesel vehicles from outside Delhi and NCR. We restrict any kind of the BS4 vehicle also in Delhi and NCR. And if required, the government can also come up with the odd and even policy, which is being taken up under the Graded Response Action Plan. And then decongestion of the traffic, reducing the traffic load over the surrounding areas also, then reducing any kind of the combustion activity in the city.
burning up of the waste or using any kind of the biomass based fuel in this particular area, that can all help in reducing the pollution in these particular area also, right, which is also being taken up. Apart from this, if the pollution starts to increase or the pollution is higher because of stubble burning, etc., then immediate efforts are being taken up, where because of the stubble burning, if pollutants are getting higher, then with the Supreme Court also, with the Government of India also, Ministry of Environment, Forest and Climate Change creates a blanket ban on stubble burning. Right? There is a constant monitoring over stubble burning also. Nowadays, satellite monitoring of these areas have also been performed, which has seen that if we compare in the last 5 years itself, the events of fire have decreased by 70%. Like it was in 2024, the events of fire were approximately 12,000. In 2018, these events of fire were more than 90,000. So it has been decreased quite substantially, but still the governments are working up with stubble burning control. We have seen there are multiple policies also which are being taken up. We have seen it, no, happy cedar and etc. have been taken up by the governments to control the pollution, or at least control that farmers must not burn their stubble or the crop waste. They must utilize any kind of the sustainable alternative also. That has also been taken up. Right. Now we speak about water pollution. Yeah, please. साइंस एंड टेक में हेपा आ सकता है. HEPA is high extremity purification assemblies. BS6. See, BS norms or BS etc. if we speak about, then this is something which is being taken up to control the automobile emissions. Right. Now, this was not present till 1998 in the country. Only in the year 2000, by the intervention of Honorable Supreme Court of India, that the Government of India started up with the creation of emission standards for automobiles in the country. What all different types of the emissions can come out, specifically monitoring volatile organic carbon, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, and particulate matter from different vehicles. These four major pollutants were monitored, right? And controlling these pollutants were taken up as the basic agenda. So we could not have controlled it to a particular limit of being healthy at the time when it was being rolled out. So we created a phase out manner, where in the year 2000 itself, Bharat 2000 was rolled out in Delhi NCR and 13 major attainment cities, the major metropolitan cities. In the year itself, in the year 2001 itself, BS2 was rolled out in Delhi NCR and 13 cities. By the year 2005, we came down to BS3 in Delhi NCR and BS2 in rest of India. Right? 2010, we came down to BS4 in Delhi NCR and BS3 in rest of India. It was targeted that we had to come up to BS5 in 2015, which didn't roll out. But in 2015, rest of India also came up to BS4. So for almost 10 years, it was BS4 all across. In 2018, we came out to BS6. Right. Now, in the BS6 emission standards, if we look up to, then in the BS6 emission standards itself, what we have done, we have rather it was from the BS4 itself, we created two different standards for diesel motors and for petrol motors. Specifically, we speak about the diesel motors or the diesel engines, which remained more polluting in that case, where the major pollutants were sulfur dioxide and particulate matter, which were
quite higher. So in BS6 we brought in three major things with the diesel motors. Number one, we brought in the onboard diagnostics. Onboard diagnostics would mean that there would be a constant control of engine combustion, the way the engine would combust or the way engine would burn the diesel fuel. First thing is this. Second, there would be constant monitoring of the engine health. This was the phase 1 of OBD, right, which was rolled out in 2019. In 2024, we came up with phase 2 of OBD, which simply means that there would be an onboard chip which would constantly monitor the type of pollutants or the level of pollutants emitted by the vehicle every time. That would mean the real-time monitoring. That is 24/7 monitoring of the pollutants which are being emitted. This is first thing. The second thing is selective catalytic conversion or selective catalytic emission. Right? Selective catalytic emission is being played upon to cut down the overall outburst of nitrogen oxides and sulfur dioxides. Practically, right? So to cut down this thing with the BS6 engines itself, urea assemblies have been brought in, which became the selective catalytic filter assemblies, right? These selective catalytic filter assemblies had urea running through the exhaust itself. With the use of urea itself, the nitrogen oxides can be selectively or catalytically chelated from that exhaust and can be reduced itself. So can be the sulfur oxide. But to reduce the sulfur oxides, one more thing that came up with BS6 was the use of low sulfur diesel to reduce sulfur dioxide. But the use of low sulfur diesel in diesel engines would have required another assembly of the engine itself. So the overall combustion assembly has been changed. With the BS6. So three things that have came up with BS6. Number one is selective catalytic emissions, onboard diagnostics, and the overall change in the combustion assembly, right? So they became practically more cleaner, right? Diesel engines, where the emissions of nitrogen oxides have been reduced by 70% in BS6 compared to BS4, right? That of sulfur dioxide has been reduced by 75 to 80% compared to that of BS4 also, right? Also, with the use of cleaner diesel which is being used, the outburst of particulate matter has also been reduced by 60 to 65% compared to BS4, right? And of course, the volatile organic carbons and hydrocarbon mix outburst has also been controlled by 45%, right? Right now, the government is looking up to cut it down by these numbers more so as to reduce it by say 90%, and sulfur dioxide again by 90% and particulate matter again by 85%. So they are trying to come up with BS7 also. Also, since these rules, BS rules, they have been followed upon, or they have been taken up in India to comply with the Euro norms, which are the equivalent norms in European Union, right, for automobile emissions. Now since the European Union has rolled out the Euro norms again, the pressure over countries like India have also increased to come up to this Euro norms also, right? But still, the governments are looking up to either coming up with BS6 or rather coming up with BS7, or to discontinue the use of diesel motors in light commercial vehicles, right? Both the policies have been taken up. In any case, even if we'll discontinue with diesel motors in light commercial vehicles also, the heavier commercial vehicles, they will continue to use diesel motors just because of their upthrust which is being provided by the diesel engines, right?
Stage 1 and stage 2, they are just phasing out these four things, right? These four things, that is volatile organic carbon, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and this. So if whatever was in BS1, right, if we take BS1 as the baseline, then in BS2 we were able to cut down 50% of that in percentage, right? Then by from BS2 to BS3 we were able to cut down 30% of what we were emitting. BS1 क्या? BS6 पे अगर आप स्टेज 1 स्टेज 2 से कंपेयर करोगे तो 156% तक डिक्रीज है कुछ चीजों में, ठीक है? कुछ चीजों में 90 से 95% तक डिक्रीज है अगर हम BS1 से लेके जाते हैं, क्योंकि हम सल्फर की बात करेंगे तो हमारा जो परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फर था that was approximately 3 milligrams per kg of the emission. वो reduce होके आ गया है 0.032, 1000 times decrease हो गया. 3 grams to 0.03. बायोडीजल से पोल्यूशन होता है, लेकिन बायोडीजल से कॉम्पनसेशन भी हो जाता है. बायोडीजल से पोल्यूशन होता है. अभी बायोडीजल है क्या? अगर हम बायोडीजल की बात करेंगे तो बायोडीजल, ऑनलाइन के कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है. बायोडीजल इज अ वेजिटेटिव ऑयल, राइट? लाइक वी हैव जैट्रोपा, वी हैव कैनोला, वी हैव Pongemia pinnata, or otherwise called as karanj in India. We have rapeseed, which is a variety of mustard only, right? We take out oil from them. We go for deoxygenation. We take out oxygen, then we go for saponification. We add in hydrogen, and we make an oil out of it, which becomes biodiesel in nature. Now this biodiesel can be burnt directly in internal combustible engines. So this emission would then depend upon what nature of engine is being used over there. Be it a BS4 engine you are using, or you are using a BS6 engine. The emission would depend upon this one. And the grade of the fuel would also depend upon this one. But now this becomes a classical case of carbon sequestration also, because while raising the vegetative oil or while raising the biodiesel based crops itself, we will absorb carbon over here, right? And by the burning of biodiesel itself, we will emit carbon. Then we can come up to a particular state. If we can increase the plantation over here, we can come up to a state of being carbon neutral over here. We would not add additional carbon into this. That's why biodiesel has a greater environmental value than the diesel that we use, right? Biodiesel, apart from these vegetative sources, can also be taken out from algae, which becomes the microalgal biodiesel, right? Algae have certain pigments. These pigments can be harvested and can be used for extraction of oil itself. That would also help in producing a biodiesel based oil, that which will again be a carbon neutral aspect of it, right? So these things have been taken up for, we can say, the air pollution. Then in case of water pollution, there are multiple sources of water pollution itself, if we can look up to. Like for example, water can be polluted because of microorganisms, because of domestic sewage and wastewater,
dung heap, etc. If it comes into, it adds in much amount of the organic waste also into this, right? If organic waste increases in any water, it creates a phenomena called as eutrophication. You might be aware of this particular phenomena, eutrophication, which then lead towards reduction in dissolved oxygen in water, which eventually kills the organisms living in water, and then that leads to an algal bloom, which is upsurge in the growth of anaerobic organisms like blue-green algae, right? That creates a pond scum or a scum over the water bodies, right? That is one basic problem associated with this. Then there are certain plant nutrients like the chemical fertilizers, then heavier metals, which are being which we can categorize as mercury, cadmium, fluorides, uranium, arsenic have been taken up as the major heavier metals which are creating pollution, right? Then the sediments coming from, we can say, soil erosion of agriculture and the strip mining, etc. And pesticides specifically, these remain as the persistent substances and these persistent substances would then exhibit biomagnification, etc. and would be loaded on the food chain. ये पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, right? Then radioactive substances like mining of uranium, etc. Then heat used for cooling up of the industries create the major pollution of the water and the water bodies. Specifically pesticides, which contains the chemicals dioxins, right, which comes from agriculture, and combustion of the waste, also manufacturing up of the herbicides, paper pulp, etc. with chlorine, which remains extremely toxic, right? Then we have the polychlorinated biphenyls, PCBs, which are also being created as electrical insulators, molecules added to plastic, and overexposure to them causes a disease, chloric, right? They do have a low toxicity for humans, but their amount is constantly getting increased. The concentration is constantly getting increased in the human population because of biomagnification. Then mercury, right, which is used in electrolysis of brine, discharges, batteries, etc. Mercury salts in fungicides, etc. Polychlorinated biphenyls, PCBs. It is not only about, it is just that we are revising these things. We are just, just don't get into writing everything. These all things are those which you might have read. If you are appearing for prelims, this is all you have read. What I am trying to do is just try to bring up that revision only, so that that particular theme of that thing is being clear, right? हर चीज को लिखने के पीछे मत बैठो. Understand the important aspect, understand the current related aspect, उसको apply करो. Just that's it. And if you require, ये PPT ले लेना मेरे से यार, ना लिखने से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा लग रहा है तो there's nothing, वो PPT दे देंगे, हाँ मैं कर दूंगा आप लोग, मुझे कुछ नहीं है. Let's understand these things, right? Like then we have the lead, which also comes into water, which comes from lead paints, lead based shoulder and the water pipes fitting, etc. Car exhaust, leaded petrol, etc. Car batteries, these all would produce lead, right? Now the simple questions are being asked over here. Which of the following are the sources of, say, mercury, say lead, say cadmium, right? Then these could be like cadmium, which is a byproduct of zinc and lead, and cadmium is also found near zinc. Pigments and ceramics contains zinc. Plating also contains cadmium. Rechargeable batteries, etc. they also contain cadmium. That comes out of from these industries, right? Then organic matter
nitrates, phosphates, they are also one of the major problem associated. Now, with these, the problems associated like mercury, we have the Minamata disease associated. The disease started from Japan, and because of this Minamata disease, we have now the United Nations Minamata Convention also enforced since 2018, right? So Minamata disease is something where the jaws start to stiff up, right? The muscles start to stiff up, and then people start losing their memory, dementia, etc., and death also, right? Cadmium over here causes the Itai disease. These are simple facts, right? Extreme pain in the muscular structures itself, right? Organic matter would lead towards the loss of dissolved oxygen, which is eutrophication of the water bodies. Nitrates would cause blue baby syndrome if excess in nature, specifically comes from fertilizer, etc., right? Or methemoglobemia in the adults. Phosphates, which come from the phosphate containing detergents, etc., they all come in water. Then there are certain groundwater pollutants also, specifically two of them. One is arsenic, which comes from multiple sources like volcanic eruption, weathering, industrial effluents, mining, agricultural runoff, fossil fuel, etc., can also bring up this arsenic based pathway. Arsenic goes into water, right? And because of this, various different problems associated, like the skin cancers, if it is visible, skin cancers, skin lesions, muscular cramp, hyperkeratosis, which also becomes the black foot disease, right? Because of arsenic. And in the same way, the fluorides also come in water, which mostly come because of mining, etc., right? And then the problems associated with fluoride also, dental fluorosis, skeletal fluorosis. The bones start to bend out, the bone porosity decreases over here, right? Then because of fluoride, kidney stones, nausea, vomiting, etc., and fluorosis. Teeth would start to turn red, teeth and gums would start to turn red, right? Which is also a problem. Then uranium is also coming up in various aquifers, right? Majorly aquifers, if you say these are underground water bodies, there are two types of aquifers we see. The first class of the aquifers are just below the soil itself, right? In which the intake of water can be because of seeping up from the ground itself. Then there could be a hard line of rock, and there could be a water body over here also, which is also the confined aquifer. So these are unconfined and confined aquifers which are being created on the underground, right? Mostly whenever we have water which is being used either from confined aquifers, either from unconfined or from confined aquifers, anyway we say we can create artesian wells. We can dig deep into it and we can create artesian wells. And specifically confined aquifers are lined by rocky lining, right? And rocks are the major sources of these three elements: uranium, arsenic, and fluorides. If there is excess expulsion of water from these sources, that is from the aquifers, a pressure would be created over rocks, right? And all those areas where a critical limit is being reached for the underground water bodies, the chances of expulsion of these heavier elements would be higher in these water bodies, right? And right now, specifically in states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, and some areas in Tamil Nadu, Jharkhand, even in Madhya Pradesh, right? These areas, they have started producing uranium as an outcome of the aquifer itself. From the borewell itself, the uranium is coming out, right? Specifically, this uranium, when it is exposed in the aquifer itself, under the underground water itself,
when it comes in presence of air, it creates oxidized form, which is uranium oxide. This uranium oxide is practically more stable than the normal form of, or we can say biostable than the normal form of uranium, right? And then it comes into the water bodies, gets dissolved in water, right? And then is expelled out of these water bodies also, where from here it can go into foods, grains specifically. Specifically rice, which is being produced in Punjab and Haryana, has a higher quantity of uranium which is being seen. Also, rice which is being produced in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, also has a higher quantity of uranium which is being seen right now, and that is all because of the aquifers are producing more amount of the uranium. Now, if this continues, kidney diseases, cancers, skin cancers, etc. would be the major diseases that would be seen in all these areas, right? So the problem of this major, generally they were created to avoid skin cancer, which can be triggered because of ultraviolet radiations which are entering. But right now the benzochlorones that we have seen, or the benzooxychlorones that we have seen, they have started creating cancers in the body with long term exposure itself. नहीं लगाना चाहिए, हम लोग तो ट्रॉपिकल वाले, लगाना भी चाहिए तो लो इंटेंसिटी लगाना. अभी हम लोगों ने क्या किया, SPF 50 SPF 60 तक पहुंच गए, 20-30 इज ओके. दैट टू जब आपका ज्यादा एक्सपोजर है तब आप लगाओ, नहीं तो अदरवाइज यूजली मत लगाओ. यूज अ क्लॉथ, यूज समथिंग व्हिच कैन, use a sunglass, use an umbrella. That is better than using a chemical over your body. That is one thing. And secondly, अभी तो क्या है कि there are many YouTube cosmetic analyzers ना, आजकल रील्स और वीडियोस मिलते हैं. They say कि रात में आप सनस्क्रीन लगा के सो जाओ, your complexion would be brighter next day. That all is hoax. ये सब नहीं करना चाहिए. हाँ, यूज सनस्क्रीन, ठीक है, आपका कलर ठीक है ना, तो वो इट इज नॉट सो. बेसिकली सनस्क्रीन्स बनाए थे यूरोपियन पॉपुलेशन के लिए. जब 1980s में जब ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगा, तो दे स्टार्टेड मेकिंग सर्टेन सनस्क्रीन केमिकल्स. वी आर ऑलरेडी एक्सपोज टू मच अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन. वी आर ट्रॉपिकल कंट्रीज, हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है. हमारे पास अपने अडेप्टेशंस वैसे ही हैं. हमारे पास अडेप्टेशन क्या है, टैनिंग हो जाता है. टैनिंग इज गुड फॉर अस. It is good for us. That melanin helps to protect our body. That melanin helps to protect our skin. In fact, it is protecting our skin from ultraviolet or even absorption of ultraviolet B and C, which otherwise comes out of because of the hole created in the ozone layer. Right? तो वो तो अच्छा ही है हमारे. टैनिंग इज गुड, टैनिंग इज नॉट बैड. पर हम लोग को लगता है ना कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स इज समथिंग, अच्छा डी टैन कर लो. हाँ, डी टैन एटसेट्रा इज नॉट समथिंग विच इज गुड. कुछ नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं होता. पिंपल्स को सिर्फ दो चीजें रोकती हैं, अच्छा खाना और अच्छा सोना. ठीक है, और जिसको होना है उसको होना है. ठीक है. तो दीज आर ऑल कैंसरस सब्सटेंसेस. नाउ अभी नेचर का रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट है दैट सनस्क्रीन लोशंस आर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस आल्सो, राइट? चलो, so basically water pollution will have an impact on biodiversity, land losses, hydrological functions, water supply, infrastructure, climate, landscape, etc. All of these, they would be adversely affected because of the water pollution related aspects itself, right? The things which were in news right now or which were in current affairs was pollution of certain rivers. Pollution of rivers, the major causes we have seen, right? And also the pollution of wetlands. Specifically in the rivers, the pollution caused because of pesticides was in news, mercury was in news, and the wetlands by organic matter and heavy metals. क्या अभी महाकुंभ आएगा ना यार,
महाकुंभ दिसंबर के बाद आएगा ना, अभी एक बार और आएगा, अगले एपिसोड में आएगा। ठीक है, then we also have Ramasar Convention related issue which has been spoken of. Ramasar Convention, which is one of the important conventions which was started in 1972. It is directed towards conservation of the wetlands, right? International wetlands. It has three major pillars which are being directed. Conservation of the wetlands, wise use of the wetlands, and creating sustainability of the wetlands across international domains, right? The wetland, this creates a conference of parties also. There is a COP of Ramsar Convention also, which meets every 3 years, and then they create directions also. There is a Montrex record which is also being created under, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है? There is a Montrex record which is being created. Under the Montrex record itself, we try to list out those areas which are under the threats of deterioration or which are being listed by the governments itself, right? It is a participatory organization to, say, BirdLife International, IUCN, etc. It is all the party to this itself, right? Other partners to this can be Convention to Biodiversity, Convention on Migratory Species specifically, UNCCD, which is United Nations Convention to Combat Desertification, right? CITES is also partner to Ramasar Convention, and United Nations Environment Program and United Nations Development Program are also partners to Ramasar Convention. There are, every year we have Ramasar sites which are being listed. Right now, December tak, there were 86 sites. And then there are 3 more sites which are being added, right, in Ramasar Convention. वो जो सबसे current वाले होंगे, वो जो होंगे मार्च तक के जो होंगे, वो we'll list them out also, right, in biodiversity. Then there has been a problem associated, there is an issue associated with acid mine drainage. Acid mine drainage is something wherever we have a mining activity which is being performed, the acidic oxidation of the substances over there creates an acidic drainage over there. This acidic drainage which is being created because of this is problematic because it can contain various different, this is the first issue आपके booklet में ही है, सबसे पहला issue यही है. It can contain various different types of the heavier metals, like mercury can be there with them, specifically when coming from the coal mines, etc., coal and steel. Or there could be other metals like iron can also come in, like the manganese can also come in. In certain cases, cadmium can also come in. In certain cases, lithium can also come in, although lithium is very little, right? Then with various mining activities, uranium, etc., in the peninsular areas, thorium, etc., can be those heavier elements that can come, right? Now from here, it can go into soil, it can go into water bodies where they can reach up to the food chains and can create the human problems and the settlement problems also. Now the solution to this either is to create of course the rules and regulation and standards, what amount of the pollutants can come out of the mining activities. That is one aspect of it, is which would be controlled by CPCB and SPCB. Another thing is bioremediation. Bioremediation remains as a process where the microorganisms are being used to degrade organic contaminants in the soil, groundwater, sludge and solids, right? Now bioremediation also has a category which is called as phytoremediation. Phytoremediation is a method in which plants are being used to control inorganic substances. Organic substances would be carbon-based substances. In bioremediation, we utilize various processes, specifically with the case of underground water or in case of aquifers. In case of aquifers, if organic matters are being dissolved, then we can go for bio-augmentation, where
we try to increase the amount of microorganisms inside the underground water body itself, which will help to deteriorate the organic matter which is present, right? Or we can create biostimulation. Biostimulation is a process in which from outside we put in certain nutritional supplements, also certain microflora, certain microorganisms. So that will increase the microorganisms inside the water bodies, which will deteriorate the organic matter. Then we can also have bio-venting, where airflow is being created, oxygen flow is being created in the water bodies, because of which the microorganism starts to grow and they deteriorate the organic matter. We also go for biosparing. Biosparing is something where flow of nutrients as well as oxygen, both is being maintained. That helps to boost the population of microorganisms and control the organic matter. Then we have bioslurping also, in which bioventing and vacuum enhanced pump. Bioventing is nutritions, oxygen plus pressure also. Right, plus pressure also. So these 5 methods are being used in bioremediation specifically with respect to water bodies. Then there is a process called as phytoremediation. Phytoremediation is to use up the living plants to clean soil, air and water contaminants if they are present. Right? Specifically, this helps in control of inorganic substances. We grow certain types of the crops and we can contain different types of the substances using these crops itself. Right? Like for example, arsenic is being controlled by sunflower, cadmium controlled by willow, cadmium and zinc controlled by alpine pennycypress, or this is a variety of cypress only, a temperate plant, chromium by tomatoes, lead by mustard, sodium and chloride by barley and sugar beets. Barley is bajra, right? Mercury, selenium, polychlorinated biphenyls by transgenic plants, etc., which has been taken up. In phytoremediation, simply phytostabilization or phytostimulation is being done. Phytostimulation is mostly either for organic substances, even for inorganic substances this has been done. Phytostabilization is when it is kept near the plant itself or is kept absorbed in the roots itself. Phytostimulation is when it is being taken up by the plant and goes up into the plant, is being stored. This mostly is being done for organic substances. Phytostabilization is being done for inorganic substances. So these substances then remain contained near the plant roots itself, and they would start to their concentration would start to reduce in soil itself. There could also be rhizofiltration, where if water comes in and trickles down in soil, then plant roots can filter out these contaminants and stabilize or stimulate them in their body, and water can go down into aquifers. This helps us to clean the aquifers also, or keep the aquifers clean also. Phytoremediation, right? Phytoremediation would involve phytostabilization, phytodegradation, phytostimulation and phytovolatilization. Phytostabilization reduces the mobility of substances, right? Whereas phytotransformation or phytodegradation uses plants or microorganisms to degrade organic pollutants in soil specifically, right? And phytostimulation is enhancement of soil microbial activity for the degradation of organic contaminants, right? And that is being done by the plant itself. Phytostimulation, it creates a microflora with its root itself. Microorganisms are also there, plant is also there. And phytovolatilization is removal of substances from soil or water with the release of air, right? So these 4 activities they are being done, they are being taken up. ये थोड़ा सा important aspect हो सकता है, because bioremediation has been asked earlier also, and this year, since this acid mine leachate has been there into news, so because of this what is bioremediation, what is phytoremediation, these things can be there, right? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सर प्रोसेस का, बिकॉज हाँ दैट्स इट, हमारे अंडरस्टैंडिंग पे होना, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछेगा
term दे देगा, what do you mean by phytoremediation, or a simple term, what do you mean by phytostabilization, or in bioremediation what is meant by bioslurping, right? At least वो methodologies, हाँ, 3 इंपॉर्टेंट हैं, आर्सेनिक, कैडमियम और स्पेसिफिकली यूरेनियम कहीं पे है तो नहीं है, ठीक है. दिस मर्करी एंड सेलेनियम, पीसी, दीज 3 आर इंपॉर्टेंट. हाँ, ज्यादा हो गया उसको. अभी there are many facts also. I'm trying to keep. वैसे तो साइंस वाला भी पूछ सकता है, why do I ask पॉलिटी और इकोनॉमी और इवन हिस्ट्री. नहीं, you require when you require a knowledge of Nagar architecture of temple art, or you require a knowledge of what was the administrative behavior of Akbar, why don't you require what is going to change in your society or what is going to change in your surrounding? At least these issues are required, no? वो तो फिर भी हिस्ट्री है तो करंट है. हिस्ट्री तो करंट ही नहीं होता है, एनवायरमेंट तो करंट वो बन जाता है, एनवायरमेंट तो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है. चलिए, नेक्स्ट इशू इज एसोसिएटेड विद प्लास्टिक, राइट? प्लास्टिक पोल्यूशन. If you look up to plastic specifically, or if you go, we'll find plastic around us. There are 5 varieties of plastic that we see. First is PET, which is polyethylene terephthalate, PET bottles that you use as your Coca-Cola and all that bottles, right? Then you have these commonly are being used in selling water, etc., all these carbonated drinks. And then we have the polyethylene, right? Polyethylene, high density. The polyethylene high density that usually we use as the thicker sheets, the polyethylene sheets, etc. Then we have the polyvinyl chlorides also, PVC. PVC, which is the chair on which you are sitting. This is a thermoset itself, right? Then you have the polyethylene low density. Polyethylene low density, which is the thinner plastic bag that you have, right, which breaks down easily. Then you have polypropylene also. Polypropylene mostly are being used in television sets, etc. All those, the hard material which is being used over there, right? Then you have polystyrene, which is the CD and the cassettes that the earlier generations we had, or even now polystyrene is also being used in computer sets also, right? And we have the bisphenol A, etc., which is being used in majority of the domestic equipments, kitchen-based equipments. These are the basic classes of the plastic that we have right now. And the major type of the debris, like from polypropylene, the debris are fishing nets, ropes, floats, detergent bottles, etc. From low density polyethylene, we have fishing floats, grocery bags and cups, etc. Then from high density, we have bottles for milk, dishwashing liquids, floating floats, etc. From PET and PBT, we have water and carbonated drink bottles. PVC, we have soft vinyl toys and soft shampoo bottles. Polystyrene, etc., we have yogurt cups, vending cups, plastic cutlery, etc. These are the type of materials which are being produced as plastic waste materials. Now, the basic problem with the plastic waste material is, if we look up to plastic as a source, we have a low density plastic. Low density plastic has a major problem that it has no commercial value and it cannot be recycled.
when it has no commercial value and it cannot be recycled, it is left as such. If the waste has been produced, the waste is not being picked up, right? No pickup of the waste. When there is no pickup of the waste, it gets accumulated. Accumulation becomes a problem over here, right? The second is all those which are high density plastics. They have commercial value, they are recycled also, right? But pollutants from recycling of such type of the plastic waste material is something which is a problematic thing. The low density plastic waste gets accumulated because of various things. Number one, it has no commercial value, first thing. Second, there is much amount of the import also. Then the government agencies, they are also not creating an emphasis over cutting down the use of low density plastic waste material also, right? It is also being used in rural areas. It is cheaper in cost. Right? Almost there is no cost of this plastic waste. It gets accumulated over. From here it goes into various sources. Specifically, it goes into water sources. From water resources, this gets into a state of being microplastic, right? If we look up to this, then the macroplastic of the size 0.2 to 20 centimeter, which enters into any kind of the water system, be it in the riverine influx, be it in the oceans, etc., and it goes into this macro state, it eventually breaks down because of the tidal actions and the wave actions of water. It goes into a meso size, becomes a mesoplastic, and then it goes into a micro size, becomes a microplastic. Microplastic is always something which has a size of 200 to 20 micrometers, right? Then from here itself, it also breaks down into nano, pico and femto size of the plastic, which remains dissolved in the water bodies, right? Where it is being taken up by various different types of organisms. Marine organisms, they consume all these, and when these marine organisms are being consumed or any kind of the food chain associated to this is being taken into, this then goes into humans itself, which is one of the major problem right now with this particular plastic, microplastic. The different types of the microplastic or different types of the microplastic based structures that we can see right now are micro beads, small structures, pellets. Is it visible? Pellets, films, fibers, fragments, they all remain in water, specifically in oceans, and this microplastic itself would be contained in the oceans. It would not go out and would remain in the basic food chain or the food cycle itself, right? Major sources of microplastic right now, majority of it comes from tires, and then from city dust, etc. The plastic based substances which they break down and remain in the air, that also comes in, and synthetic textiles, nylon, etc., which is being used, right? Neoprenes, etc., nylons, etc., all of this, they will have plastic pallets, marine coatings, road markings, etc., personal care products. They are much lesser, but tires have become a large scale problem right now as far as microplastic is considered. If we look up to them, then the plastic products are being categorized as primary products and secondary products also. Primary products are those which are being used by humans, right? They will remain in a longer use. Secondary products are also being used, but they are those which are, for primary products, we can take care of it. The secondary products, where once the use is finished, they are not being taken care of, right? They are not properly being recycled. So they are being directly released in the substances. Or primary microplastic is something which is directly being released by humans. Secondary microplastic is when that primary microplastic breaks down into the environment and goes down into smaller pieces of being meso, micro, pico or nanoplastic material. Then that becomes a larger problem also, right? Majority of this microplastic ends up into the fishes, and then from here it ends up into the marine food cycle, and from here it ends up into the humans, which is becoming a greater menace right now.
right? So a state of microplastic has been spoken of. It has been constantly increasing. Current affairs में facts को generally आप पढ़ लीजिएगा, microplastic के heading में जो आपके facts हैं उसको पढ़ लीजिए, right? A treaty is to be created for plastic management. In India, plastic management is being done by the plastic waste management rules. The major rules are being created in 2016, amended in 2018, then amended in 2021. Right? Basically, it speaks about the minimum grade of plastic that can be used is 50 micrometers. We should not use any plastic below this. Right? This is one aspect of it. Plastic is urban and rural both. So management should be in urban and rural areas both. Right? Then under this only, ban on one-time use plastic has also been brought into by the government of India. So any plastic which is one-time use, that may be plastic plates, cutleries, cups, etc., they must not be used, or a complete ban has been imposed over it, right? Then poly bags, any poly bag below the prescribed thickness of 50 micrometers is something which is not to be taken up by the consumers, or is banned by the government of India, right? Also, the plastic waste importers, if there are any, then they must be properly registered. Who is importing the plastic waste? Who is recycling the plastic waste? Number one, plastic waste recyclers and importers, both of them are being registered right by the government of India, so that quantification of what amount of plastic enters into the market and what comes out as waste can be done right. Apart from this, whatever plastic waste is there, that can be categorized into energy plastic and into non-energy plastic. Right? Energy plastic is something, energy plastic waste is something that can be used in burning and creating waste to energy. And non-energy plastic is something which cannot be used in creating waste to energy or cannot be incinerated, then it can be used as filler material. Also can be used in road construction. Has been directed by plastic waste management rules also. But despite all these things, in 2024, India has ranked number 1. Right? In producing the plastic waste material. Right? It has surpassed China. China, of course, is ranked second. After this, we have US and then we have Japan, 1, 2, 3, 4. But India, which was 5th in 2022, has been ranked number 1 in producing the plastic. This is because of more amount of the plastic dependency which has been created. Right? And the microplastic chain which is being constantly created is something which is dangerous for us. To end up with this, the United Nations Treaty on Plastic Pollution has been drafted. It was drafted in 2022. The basic idea has been brought in by United Nations Environment Program, right? And been discussed in United Nations Environment Assembly also. So once it was discussed in United Nations Environment Assembly, a proposal 5.2 was brought in United Nations Environment Assembly to cut down plastic, or to create a long-term strategy to cut down the plastic waste production, and not use, but at least plastic waste production by 2040. So a long-term strategy is to be created. For that, starting from 2022 November, the negotiation committees were created, international negotiation committees, intergovernmental negotiating committees have been created. 5 rounds of these discussions have been done till 2024. Still, the negotiations are in progress. The African countries and the Asian countries, they require more benefits out of it, so the negotiations are still pending.
In 2015, it has been 25. It has been expected that a diplomatic conference would be brought upon and a global treaty would be created over the plastic ban. The overall target is to reduce the waste, increase recycle, or to increase the reuse, which is being taken up. These two things are being taken up under this particular global plastic waste treaty, right? Chalo. And these have been things associated or themes associated to pollution. Now we can quickly also discuss the themes relative to climate change. Majorly in climate change, the impact of climate change, specifically certain climatic gases, their impacts have been the first theme which has to be taken up. If we look up to the global climate change or global climate change related aspects, then climate change is being brought upon by certain gases which are being now taken up as the greenhouse gases, right? The greenhouse gases, the classes of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitric oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, sulfur hexafluoride, etc. have been, or even nitrogen trifluorides, NF3, right? Chlorofluorocarbons, they are major gases which are causing the climate change or global warming, which has been identified by global warming potential, right? Which measures how much infrared thermal radiation a greenhouse gas would absorb over a given time frame, which is called as the greenhouse gas global warming potential, right? It becomes a comparative entity. Carbon dioxide is being taken up as 1. Then for a cycle of 20 years, methane is 83 times potent. Then either from fossil or non-fossil, it is 80 times potent. Nitrous oxide is 273 times potent gas as far as the global warming potential is being considered, right? And chlorofluorocarbons can be up to between 8 to 10,000 times more potent than carbon dioxide. And hydrofluorocarbons can be from 2,000 to 8,000 times potent. As far as a 20-year life cycle, in a longer life cycle, they are more potent. In a 500 or 100 years life cycle, that means if they will remain in these areas, the warming from these gases would be far more higher. Sulfur hexafluoride and nitrogen trifluorides have also been much more higher. The highest is being seen by sulfur hexafluoride. Even in a 220-year cycle or in a 500-year cycle, sulfur hexafluoride shows the highest warming potential itself, right? Simple questions aate hain. Then we also quantify this global warming with the help of carbon dioxide equivalents, right? The amount of heating that a particular greenhouse gas can do, or it can be seen from a particular greenhouse gas compared to 1 gram of carbon dioxide or 1 metric ton of carbon dioxide, right? 1 metric ton of CO2 and 1 metric ton of any GHG. When we compare this thing, what amount of heating is being seen? The maximum heating is being seen by sulfur hexafluoride. And we also have methane, nitrous oxide, then we have perfluorocarbons, hydrofluorocarbons, and nitrogen trifluorides. These are certain which have the highest amount of the carbon dioxide equivalents also, right? Now, nitrous oxide has been spoken of in current affairs recently, where nitrous oxide has been spoken of as a potent greenhouse gas, which is almost 270 times global warming potential than carbon dioxide, and approximately 270 times carbon equivalents also. Right? Majority of the nitrous, इसमें question क्या बन सकता है nitrous oxide से? The sources, which of them are the major sources? So the largest source is agriculture, because of breakdown of the organic and inorganic pesticide fertilizers that we use, number one, and because of breakdown or burning and stubble burning cases in the fields itself, nitrous oxide comes in from the agricultural field. The second largest source over here remains the energy, where burning up of the fossil fuels, etc. Then waste material, the anaerobic breakdown or the aerobic breakdown of the waste material produces nitrous oxide. Land use, transport, others, etc. can be the major sources.
of the average lifespan of nitrous oxide. Average lifespan is 114 years into the atmosphere, and it has a 100-year warming potential between 260 to 290, right, with respect to carbon dioxide. The maximum production of nitrous oxide has been seen from China, then from India, Brazil, USA, right? This is 1, 2, 3, 4, right? Then in the African Sudan and the Russian Federation, Australia, they are also the emitters right now with the nitrous oxide at the global level. Also, chlorofluorocarbons have also been spoken of recently. Chlorofluorocarbons have been spoken of with respect to the ozone. So chlorofluorocarbons, they are those substances which were earlier used as the refrigerants or even the precursors of Teflon, or for foaming agents, or in medicine operations, solvents, fire extinguishers, etc. Chlorofluorocarbons. So this is one variety of question that can be asked, right? ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे ऐसा करके पूछ चुका है 2023 में, क्योंकि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अभी कॉन्सेप्ट में है. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पे मैं आ रहा हूँ. करंट ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है या ग्राउंड लेवल ओजोन है, लेकिन ग्राउंड लेवल ओजोन आता किससे है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ कांस्टेंट mechanism where chlorofluorocarbons, they get accumulated in the upper layers of troposphere or even in stratosphere. In stratosphere, they break down the ozone using this reaction, where chlorofluorocarbon in presence of ultraviolet radiation creates a chlorine free radical. This chlorine free radical attacks over the ozone and creates oxychlorates, the chemicals. These oxychlorates then again react with ozone and break down ozone into oxygen and chlorine, which again harvest chlorine, and this becomes a chain reaction. This breaks down the ozone which is present into the stratosphere. This is the basic chemical reaction. Because of this, either the ozone is released from the stratosphere, or loosely bounded ozone is released from the stratosphere, or ozone is depleted from the stratosphere itself. Creates an ozone hole, also induces the tropospheric ozone concentration, right? The tropospheric ozone, or otherwise also called as the ground level ozone, is something which has been in news right now, which is there in current affairs. The ground level ozone is formed either as a release from stratosphere, or is also formed in the ground or in the troposphere by a chemical reaction of various different type of the organic substances like methane, carbon monoxide, the non-methane volatile organic substances, nitrogen oxides, etc. When they all combine together, they have, in presence of sunlight, they can harvest ozone, right? So ozone over here in the stratosphere is the outcome of the organic pollutants only, right? In the troposphere, it is an outcome of organic pollutants only. And in the ozone, in the overall cycle, now see, if we have, say, automobile exhaust, ये एक vicious cycle है, ठीक है? Automobile exhaust will have volatile organic carbons, right? Will have carbon aerosols also, black carbon, etc. And then will also produce oxides of nitrogen, sulfur dioxide, etc. Now these all can combine to harvest ozone, right? Which then becomes the triggerer of formation of photochemical smog. Which again is triggerer of formation of ozone. And this becomes a vicious cycle over here, right? And this photochemical smog lead towards warming. That's why the ground level ozone right now is being taken up as a greenhouse gas like agent, which enforces warming up of the lower atmosphere and causes climate change. ठीक है? Do you follow this thing? समझ में आया? Okay. तो
this is constantly is a particular cycle which is being created, and because of this ozone, one of the important problem associated right now is loss of forest, because this ozone, which is the ground level ozone, it disrupts the plant leaf cells, which reduces photosynthesis, which eventually reduce the fixation of CO2, right? It will break down the leaf tissues, it will also break down the root tissue. So deforestation or defoliation in the forest is something which is being seen because of this ground level ozone, right? And if we can see, in presence of ambient ozone itself, the number of leaves in plants decreased by 64%, the branches decreased by 45%, the stem decreased by 36%, the roots decreased by 40%, and the fine roots also decreased by 50%. So this is a complete deforestation activity which is being triggered by the ozone, which right now is being predicted that with the increase in tropospheric ozone by 2050, a 26% loss in global carbon sequestration is predicted. That means the amount of carbon that would be absorbed by a forest by 2050, a 26% loss is expected in a time when we are heavily dependent right now in the international policies for the forest, or we are depending on various policies associated with afforestation. At the same time, if tropospheric ozone is higher in amount, this will hamper our efforts also. And in a long-term strategy, we have created a net zero strategy, net zero emission strategy, where the forest play a larger role. If we are not in a state to control tropospheric ozone, then all those strategies may fail in a longer term. With increasing climate, with increasing temperature itself, there is a pressure over the forest, and with this increasing ozone itself, if there would be an additional pressure over the forest, and deforestation activity would be much more higher, which has been spoken of in current affairs recently, right? ठीक है, ये एक न्यूज़ है, आप बुकलेट में देखोगे तो देयर इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और ग्राउंड लेवल ओजोन एंड देयर प्रॉब्लम्स, राइट? अभी वी आर डिस्कसिंग इश्यूज बिटवीन पेज नंबर 50 टू पेज नंबर 70 इन योर बुकलेट, राइट? ऑल दोज इश्यूज व्हिच आर देयर, उनके थीम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. This is there, tropospheric ozone, which has been introduced, right? Abhi, next thing, if we look up to, there is climate change, and because of climate change, there would be global warming, and there would be various different problems associated. ये आपको शायद पता होगा. Just I am revising all these things. What all can happen? There would be a changing rain and snow pattern that would be seen because of the climate change itself, right? There would be stronger storms, so loss and damage because of the storms, etc., would be much more higher. Storms and cyclones. This will damage the corals also, right? There would be rising sea level. There would be warmer oceans that would be seen, right? Because of which, again, coral bleaching can be seen and corals would be damaged over here. Higher temperature and more heat waves would be seen in the terrestrial regions. That will have an impact over the ice caps also, right? The glaciers also. Less of the ice and the snow. Thawing up of the permafrost would be something which would be seen. Then changes in the plant life cycle which would be seen, and more drought and wildfire conditions would be seen because of this, and overall seasonal variations would also alter because of this, right? Which would be the major impact. Large scale impact is being expected over glaciers right now, and this year current affairs spoken about climate change and the loop of this glacier and the glacial meltdown itself, right? And we look up to the darker surfaces would be created if because of this global warming or because of any form of the climate change activities which are being seen, the ice would break down, the glaciers would break down, exposing more amount of the land. Then the absorption of the sunlight would be higher, the albedo would be lower, then
the glaciers would melt down and would increase the sea level also. Additionally, the amount of vegetative carbon which was then stored under the glaciers itself, which is anaerobically degraded inside the glacier, would be released, and more amount of methane would be released into the atmosphere. With this also, changes can be seen. So if we look up to the major glacial meltdown events, the sea ice retreating, that means sea level, the basic ice may retreat, the oceanic ice or the larger glacier caps that we have on the poles, they will start to retreat, right? There would be decrease in albedo, and also there would be increased carbon dioxide emission as well as methane emission, right? New wetlands would be formed which would emit more amount of the methane. Lakes drained as the permafrost would also melt out. The permafrost thawing in the warmer regions, specifically in the Andes and the Himalayas, would be much more higher. Then because of all these, there would be an exposure of exposed land that can be seen. A drier condition much near the glaciers can also be seen. Wildfire events, etc., they would also be seen over here. So warmer spring and summer, because of carbon dioxide emission, it would become a constant cycle over here. Increased intensity of fire, replacement of conifers, etc., in the broadleaf land, the vegetation may change. All of this may be seen over here in the glacier. And then the carbon layer in the soil would also change. Permafrost related layers, they would also change specifically. So if we look up to this, permafrost specifically, which is the ground which remains frozen most of the time, right? It is the ground that remains below 0 degree centigrade for 2 or more years, right? For 2 or more years, if the ground remains in a 0 degree state, that becomes a permafrost. Now, this permafrost has 2 different layers. If we look up to this, this permafrost has multiple layers. One, that can be the active layer, the upper layer. This can be the upper layer, right? Where there is less amount of the nutrients because of lesser amount of the soil microorganism activity. यहाँ organic substances नहीं होंगे, leaching ज़्यादा होगा, ठीक है? Just below that, this is all permafrost, right? Which becomes the permafrost layer, right? It will have all frozen water, right? If there are certain lakes in these regions, there could be a lake, then a soil which is below the lake where water can percolate, that is called as calic, and much below to that there would be all permafrost, right? So in this way, the permafrost is being created, or permafrost substances are being created. They have a variable thickness. A subsea permafrost is also created. Various different types of the permafrost can be seen, where a continuous permafrost is created, just like in the glacial regions we have a continuous permafrost, Greenland, etc., right? And a discontinuous permafrost is also being created, or a sporadic permafrost, the small patches of permafrost near the glacial regions, or the alpine permafrost, like the one we have in the Ladakh and Tibetan plateaus, the alpine permafrost which is being created, right? If we look up to the global distribution of permafrost right now, is all there in the northern hemisphere, and is some amount of it is also there in the Himalayas, etc. If you look up to, this is the Indian permafrost that we have. It is approximately 23 million square kilometer. 25% of the exposed northern area is permafrost, right? Specifically Siberia, Russia, the Qinghai Tibet Plateau, in the America, Alaska, Canada, and the Greenland. These are the major permafrost regions of the globe also, right? Permafrost contains various different types of the organisms, like there could be viruses, there could be bacteria, various different types of bacteria. They can store much amount of the mercury, which is being stored because of decomposition or degradation of the vegetation in these regions, right? They can have nuclear waste sites also, because these are isolated sites, so much amount of the nuclear waste are also being dumped over here. They can have ancient DNA associated also, various different types of the DNA is associated with humans or even animals, etc., which are being frozen down into the soil. They are all being seen over there in the permafrost region.
Now, permafrost thawing is something which is being seen. With increasing temperature, the permafrost would start to melt down. And as the permafrost would start to melt down, the active layer would start to increase. Right? If we look up to this is the active layer. Is it visible? If you look up to this is the active layer. This is permafrost. अभी दिखाया ना, ऊपर एक छोटा सा active layer है, फिर नीचे permafrost, right? So as this would start to deteriorate, this active layer would broaden up. Now this active layer would broaden up, will have fixed amount of carbon which has been there, right? Carbon, either the microorganismic carbon or the soil carbon, any form of the carbon which is stored over there would be exposed in the active layer and would then be expelled out, either in the form of methane or some other form of the soil carbon, which would again be exposed and degraded, deteriorated and exposed in the form of methane. So these soils, which are the permafrost based soils, in a long term they all would become methane producing soil, or degrading soil components would be created, and this will create a large scale problem where the overall active layer, if it increases and the permafrost decreases, the thawing up of the permafrost will have a large scale problem. Number one, increased concentration of the greenhouse gases, etc., that would be seen in the permafrost region because of thawing up of these permafrost. The ice caps, now this will increase a climate change or global warming like phenomena, which will have an impact on receding ice caps in the glacier regions, which again will expose permafrost. Rocks would fall down and thawing up of the permafrost would again be triggered over here, right? Then there would be release of carbon dioxide and methane because of this, damage and destruction to infrastructures, loss and damage of the cultural artifacts, etc., that would also be seen. And the coastal regions will see more amount of the erosion coming out, right? So much amount of the heavier metals like mercury, specifically iron, carbon from the permafrost soil, and nitrogen based nutrients, they will all be exposed and they would all be brought down into the as sediments into the oceans. ज्यादा हो गया है, दिमाग में नहीं जा रहा है, जा रहा है? अच्छा, हिंदी में बोल दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, हिंदी में बोल दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, चलो ठीक है. तो there could be various socio-economic problems also in these regions, और ultimately क्या होगा, fine, ultimately क्या होगा कि metals, specifically mercury, iron, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये सब ओशंस में आएंगे, जिसका साइकिल डिस्टर्ब होगा. पहला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होगा? मरकरी के एक्सपल्शन से. पहला प्रॉब्लम तो होगा इस पूरे रीजन में नाइट्रोजन साइकिल चेंज हो जाएगा. ठीक है, परमाफ्रॉस्ट जितना, अगर परमाफ्रॉस्ट एक्टिव लेयर को बढ़ाएगा सॉइल के, तो नाइट्रोजन ज्यादा बनेगा, नाइट्रोजन ज्यादा निकलेगा उस एक्टिव लेयर से, जो सेडिमेंट्स में आके वहां के वेटलैंड्स में या ओशंस में डिसॉल्व हो, जो नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा और नाइट्रिफिकेशन की जो भी प्रोसेसेस हैं उसको एनहांस करेगा, वेयर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एटसेट्रा ये सब इंक्रीज हो जाएगा, अमोनिया एटसेट्रा यहाँ से ज्यादा रिलीज होने लगेगा. पूरा जो नाइट्रोजन साइकिल है, स्पेसिफिकली जो हमारे पोलर ओशंस हैं, इन पोलर ओशंस का जो साइकिल है नाइट्रोजन का, ये सब डिस्टर्ब होने लगे. एंड व्हेन इट वुड बी डिस्टर्ब, बिकॉज ऑफ दिस द कंप्लीट नाइट्रोजन बेस्ड फिनोमेना इन द ओशंस वुड बी डिस्टर्ब. तो ये परमाफ्रॉस्ट डिस्टर्ब होगा, नाइट्रोजन साइकिल पोल्स का डिस्टर्ब होगा, तो मेडिटेरेनियन रीजन्स का भी नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब होगा जो ओशंस का है, जिससे प्रोडक्टिविटी पे एक एम्फेसिस आएगा. अब ये दो एम्फेसिस आ सकते हैं. पहला एम्फेसिस क्या आएगा? अगर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाएंगे तो पोलर
ओशंस में और हमारे ट्रॉपिकल ओशंस में भी, क्योंकि वो बाद में ट्रॉपिक्स पे भी आएगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, एल्गल ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स बढ़ जाएंगे। ये सारे एल्गल ब्लूम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्गल ब्लूम्स स्पेसिफिकली नियर द पोलर रीजन्स वुड बी मच मोर। और वैसे भी पोलर रीजन्स में मरीन अपवेलिंग बहुत हाई होता है, पढ़ा होगा ना, पोलर रीजन्स में मरीन अपवेलिंग। मरीन अपवेलिंग जानते हो, जैसे जैसे पोल्स की तरफ वाटर जाता है तो हमारी विंड एक यू टर्न लेती है। कौन सा इफेक्ट है, कोरियोलिस इफेक्ट है। कोरियोलिस इफेक्ट से ये ओशन करंट्स जब यहां पहुंचते हैं तो ये भी यू टर्न लेने के चक्कर में पलट जाते हैं, अपवेल हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स अपवेल होते हैं पोलर रीजन्स में, राइट। प्लस नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब होगा परमाफ्रॉस्ट के मेल्टिंग से या थॉइंग से, तो नाइट्रोजन और बढ़ेगा, अपवेलिंग और बढ़ेगी, अपवेलिंग ज्यादा बढ़ेगी तो एल्गल ब्लूम्स भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है परमाफ्रॉस्ट के चेंज होने से। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है परमाफ्रॉस्ट के चेंज होने से, यहां पर टोटल जो इरोजन ऑफ द लैंड है वो बढ़ सकता है, बिकॉज परमाफ्रॉस्ट लूजन अप हो जाएगा, सॉइल ज्यादा लूजनड अप हो जाएगी, जिससे if the ocean reaches up to these soil there would be more chances of erosion in these regions, जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक करेगा। प्लस जैसे जैसे ये पूरा जो टैलिक रीजन है, जो हमारा एक्टिव रीजन और परमाफ्रॉस्ट का रीजन है, उसका पूरा कॉन्टिन्यूएशन चेंज होगा, तो ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम जो एक्विफर्स अभी परमाफ्रॉस्ट के बिल्कुल नीचे, एक्विफर्स मतलब जो सॉइल वाटर है, ग्राउंड वाटर है, जो परमाफ्रॉस्ट के ठीक नीचे ही है अभी, इन अ स्पैन ऑफ 30, 40, 50 ईयर्स ये सब नीचे नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो जो सॉइल सेडिमेंट्स है ना वो ज्यादा डिपॉजिट होंगे और ग्राउंड लेवल वाटर का डेप्थ बढ़ जाएगा परमाफ्रॉस्ट रीजन्स में। ये सेकंड प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रोजन से, सेकंड प्रॉब्लम है आपके ग्राउंड लेवल वाटर से प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे रीजन में परमाफ्रॉस्ट में यदि आप देखेंगे पूरे रीजन में, चाहे वो एक्टिव लेयर हो या परमाफ्रॉस्ट का लेयर हो, मरकरी का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है। मरकरी, स्टोर्ड मरकरी है, और वो सब आइस कैप के नीचे वाला। ये मरकरी बना कहां से है, ये सब ऑर्गेनिक मैटर के डिकॉम्पोजिशन से बना, ठीक है, और वो स्टोर हो गया। अगर हम सारा मरकरी कंपेयर कर लें, एंथ्रोपोजेनिक कंपेयर कर लें, टेरेस्ट्रियल कंपेयर कर लें, टेरेस्ट्रियल डिफॉरेस्टेशन से आने वाला मरकरी कंपेयर कर, वेजिटेशन का मरकरी, ओशंस का मरकरी, सारा मरकरी कंपेयर कर लो, उन सब का डबल हमारे पास कहां पर है, परमाफ्रॉस्ट में। और परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट होगा तो ये मरकरी का एक्सपल्शन बढ़ जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ, राइट। नेक्स्ट, ग्लेशियर एरियाज में क्लाइमेट चेंज का एक और इम्पैक्ट। पहला इम्पैक्ट है परमाफ्रॉस्ट का मेल्टिंग। सेकेंड इम्पैक्ट विच इज ऑल्सो बीन स्पोकन ऑफ इन करंट अफेयर्स, वो है इस पूरे रीजन का जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन हो रहे हैं, लैंड एक्सपोज हो रहा है, पूरे रीजन का वेजिटेशन पैटर्न चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पहले क्या था, अगर ये ग्लोबल एरिया है, ये आइस कैप वाला एरिया है, तो हमारा वेजिटेशन लाइन यहां खत्म हो जाता, ठीक है ना। पढ़ा है ना, अलग अलग बायोम्स पढ़े होंगे ना, एक बायोम है टुंड्रा, फिर उसके नीचे होता है टैगा, ठीक है ना। टैगा अराउंड 75 डिग्रीज नॉर्थवर्ड पे आपको देखने मिलेगा, उसके बियॉन्ड टैगा नहीं है। टैगा में फॉरेस्ट नहीं है, बोरियल फॉरेस्ट देखने मिलता, बोरियल फॉरेस्ट के एज के बाद फॉरेस्ट नहीं देखने मिलता, वेजिटेशन मॉसेस देखने मिलेंगी, लाइकेंस देखने मिलेंगे, बट दैट टू इज कंसिडर्ड इन टैगा। टुंड्रा में देयर इज नो वेजिटेशन। टुंड्रा को हमने क्या माना है, टुंड्रा इज ऑल आइस कैप। लेकिन अब ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, रिसीड होंगे, लैंड एक्सपोज होगा। जब लैंड एक्सपोज होगा तो वेजिटेशन वुड कम डाउन इन दीज रीजन्स, और सबसे पहले क्या देखने मिलेगा, मॉसेस देखने मिलेंगे, लाइकेंस देखने मिलेंगे। These mosses and lichens, they would be attracted to these lands and they would cover these lands, जिससे क्या होगा, पूरे एरिया का वेजिटेशन चेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले लाइकेंस एटसेट्रा आएंगे, मॉस, लाइकेंस, और फिर धीरे धीरे स्लेजेस आना शुरू होंगे, यानी कि पोलर एरियाज में वेजिटेशन का सक्सेशन बढ़ना शुरू होगा,
ठीक है, स्लेजेस, छोटे छोटे जो श्रब्स होते हैं एटसेट्रा, दैट दे विल ऑल्सो कम अप, राइट। एंड इवेंचुअली इनिशियली तो होगा कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, मॉसेस और लाइकेंस का कंपटीशन बढ़ेगा, मॉसेस और श्रब्स का कंपटीशन बढ़ेगा, जिसमें मॉसेस आगे जाके ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं और पूरी बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन में चली जाएगी। अभी ये देखा है हम लोगों ने ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स में, जहां पे 2012 तक मानते थे कि ओनली 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेजिटेशन कैन बी सीन, अभी 2025 में 24 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द वेजिटेशन चांसेस स्प्रेड है, जिसमें 12 स्क्वायर किलोमीटर में तो पॉजिटिव वेजिटेशन प्रेजेंट है। ये इतने छोटे स्पैन में ही ये लाइकेंस और मॉसेस के लैंड्स बन रहे हैं, जिससे पूरा एरिया क्या है, चेंज होगा। अब वो क्या होगा, अब उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगा, अभी तक ये इनहैबिटेटेड था। कौन सा रीजन, जो आपका नॉर्दर्न रीजन है, पोल्स के आसपास का रीजन है, ये तो हैबिटेटेड था नहीं, वेजिटेशन थी नहीं, हमारी वेजिटेशन यहां थी। तो हमको टैगा के लिए नॉर्दर्न साइड में तो ओपन फील्ड मिलता था वहां की वेजिटेशन को डोमिनेट करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा, यहां से वेजिटेशन सिर्फ इस तरफ थोड़ी ना जाएगी, यहां की जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो इस तरफ भी तो एक्सपैंड करेगी। तो एक कॉन्फ्लुएंस रीजन हमको देखने मिलेगा जो डाइवर्ट करेगा किसको, टैगा के बोरियल फॉरेस्ट रीजन्स को डाइवर्ट कर देगा। इससे क्या होगा, एक नया इकोटोन बनेगा। इकोटोन समझते हो ना, कॉन्फ्लुएंस रीजन, एक नया कॉन्फ्लुएंस रीजन बनेगा, जिससे अब सिर्फ प्रॉब्लम हमारे पोल्स को नहीं होगा, प्रॉब्लम्स सब पोलर वेजिटेशन पे भी हो, विच इज ऑल्सो बीन स्पोकन ऑफ दिस ईयर करंटली। ठीक है, ये दो मेजर इश्यूज है। पहला परमाफ्रॉस्ट का थॉइंग, उससे निकलने वाले पोल्यूटेंट्स क्या क्या है, मर्करी है, नाइट्रोजन एटसेट्रा है, आयरन एटसेट्रा है, जो पूरे एरिया में मडी वाटर भी क्रिएट कर रहा है, ओशंस में सेडिमेंट्स को बढ़ा रहा है। साथ में क्या है, वेजिटेशन नॉर्दर्न एरिया का, नॉर्दर्न पोल्स में बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो डिस्टर्ब करेगा जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और फॉरेस्ट कंडीशंस है उसको। One more problem that we have seen this year was because of forest fire. जैसे जैसे the events of warming they are increasing, वैसे वैसे forest fire का भी condition क्या हो रहा है, increase होता जा रहा है। The forest fire condition can be of two types, where we have a higher severity fire, where a large scale damage is being seen in the area, or there could be a low intensity fire also, right? In the higher severity fire, if we look up to this one, there is the things start to come down into the soil, also mixes up with the soil, the ashes may come up into the soil। ठीक है, फिर उसके रन ऑफ से वो वाटर बॉडीज में भी जाता है, पूरे सिस्टम को डिटोरिएट करता है, प्लस जो वुडलैंड्स थे उनका कंप्लीट लॉस हो जाता है, जो वाइल्ड लाइफ है जिसका वो हैबिटेट है वो पूरा हैबिटेट का लॉस हो जाता है, सो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है सीवियर इंटेंसिफिकेशन से, प्लस अ लार्ज स्केल ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन। ठीक है, अभी ये एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन जिस रेट से फॉरेस्ट फायर बढ़ रहा है, अभी जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन का हम रिडक्शन करेंगे उससे ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होने लगे। ठीक है, इतना सारा सब कुछ करके हमने एमिशन को रिड्यूस किया है, अभी क्या होगा, फॉरेस्ट फायर की इवेंट्स अगर बढ़ेंगे तो उतना एमिशन बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ये बोला है कि एक गैप आएगा, फॉरेस्ट फायर गैप आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 गीगाटन का। हम जितना कम करेंगे उससे 1 गीगाटन ज्यादा फॉरेस्ट फायर से निकलेगा अगर हमने कंट्रोल मेजर्स को लेना शुरू नहीं किया। ठीक है, साथ में हम फॉरेस्ट फायर्स में देखें तो लो इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर पोल्यूटेंट्स का अक्यूमुलेशन बढ़ जाता है फॉरेस्ट फायर से, राइट। तो ओवरऑल फॉरेस्ट फायर क्लाइमेट चेंज से आ रहा है और क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। टेम्परेचर्स आर राइजिंग, स्नो इज मेल्टिंग, फॉरेस्ट आर ड्रायर एंड लॉन्गर, फॉरेस्ट आर गेटिंग वर्स, एंड देन वो पूरा एक विशियस साइकिल बन गया है। ठीक है, देयर कुड बी हाई इवेंट्स ऑफ फॉरेस्ट दैट आर बीन सीन,
फॉरेस्ट फायर दैट आर बीन सीन दिस ईयर करंट अफेयर्स में। अभी यही इशू में था, यूरेशियन फॉरेस्ट फायर स्पेसिफिकली एंड द एशियन फॉरेस्ट फायर। यूरोप में जो फॉरेस्ट फायर था वो सबसे ज्यादा, फिर लॉस एंजलिस में भी फॉरेस्ट फायर इवेंट्स थे हमको देखने मिले, ठीक है। यूरोप में स्पेसिफिक फॉरेस्ट फायर नॉन फॉरेस्ट साइट्स पे भी और फॉरेस्ट साइट्स पे भी हमको स्पेसिफिकली ये जो देखने मिल रहे हैं। इंडिया में भी, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4 गीगा टन्स of carbon equivalent forest fire was seen in the year 2023 to 2024. This is according to Indian Forest Survey, State of India Forest Report, right? So abhi these events are also increasing, so the efforts are getting into wane, right? We have to create a long term forest management strategy for management of this forest fire also, right? If you look up to this, in 2024 itself the events of forest fire were above were more in Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and the Odisha, which otherwise is a mix of dry and wet deciduous forest conditions. Apart from this, forest fire events are also seen in the northeastern part of the country, जहाँ पे we have a denser forest condition also. तो वो एक problem बना हुआ, right? जो forest otherwise wet थे वो धीरे धीरे ड्राई होने लगे हैं, और ड्राई होने के साथ साथ क्या होने लगा है, वी हैव मोर अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट फायर इवेंट्स विच आर बीन सीन। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका में तो नहीं है, आंध्र प्रदेश हो। वेस्टर्न इज नॉट दैट मच इफेक्टेड बिकॉज वेस्टर्न में उतना फायर ही, उतना फॉरेस्ट ही नहीं है ना, स्क्रब वगैरह है। यहाँ तो यहाँ पे स्क्रब है, रेस्ट दी वेट एंड दी ड्राई डेसिडियस इज मोस्टली इफेक्टेड सबसे ज्यादा। और वैसे भी इंडिया में 31% इज ड्राई डेसिडियस, 29% इज वेट डेसिडियस, तो ये दोनों इफेक्टेड है इंडिया में, ठीक है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल क्लाइमेट पॉलिसीज। ये सिंपल है, ये सब आपको पता होगा, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो करंट हाँ क्वेश्चन पूछता है इधर उधर थोड़ा सा। ठीक है, चलो वील टेक 15 मिनट्स और ये सब एक बार में आपको क्लब आउट कर देता, ठीक है। In 1972 there was Stockholm Convention, which was created as Human and Environment Convention, United Nations, right, which eventually brought down 1987 का Montreal Protocol to control and cut down the ozone layer depleting substances. Then based on this IPCC was also formed, ठीक है। IPCC ने फिर बाद में Convention on United Nations Convention on Environment and Development 1992 में बुलाया था, which was the Earth Summit. As the outcome of Earth Summit, we have the UNFCCC, which has been created, Convention for Biodiversity, which has been created, and United Nations Convention to combat desertification. Apart from these two, Rio Declaration, and we have this Agenda 21, which has been created. Agenda 21 evolved into the Sustainable Development Goals and eventually Millennium Development Goals later on. And the Rio Declaration was then helpful in creating new sets of the human rights and the environmental rights across the globe itself, right? बाद में 1992 में जो United Nations Convention on Combat Desertification etc. बाद में UNFCCC was came into force in 1994, ठीक है। 95 में पहला कन्वेंशन ऑफ पार्टीज COP1 है, which was in Berlin, and 96 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का फॉर्मेशन हुआ। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज फॉर्मेशन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997, राइट। 97 में बना क्योटो प्रोटोकॉल इज रैटिफाइड बाय 192 कंट्रीज राइट नाउ, राइट। स्पेसिफिकली अभी स्टार्ट तो 140 से हुआ था, बाद में देखा अभी सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो बाहर हैं इसमें, एक USA और कनाडा, ये सब अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एल्स देन दैट ऑल ऑफ देम दे आर इन कंट्रोल ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सो इट हैज क्वांटिफाइड द ग्रीन हाउस गैसेज ऑल्सो। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड प्राइमरी गैसेज थे, फिर
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड सेकेंडरी गैसेस है। इसके अपार्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी हम ग्रीन हाउस गैस मानते हैं, लेकिन दैट इज कंट्रोल्ड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल वहां पे इसको एम्फेसिस में नहीं लेता। ठीक है, फिर इसके बाद नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को भी हमने 2014 ऑनवर्ड हमने इसको एक ग्रीन हाउस गैस के जैसे देखा है। सो ऑल द ग्रीन हाउस गैस आर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दीज आर बीन टेकन अप एज द ग्रीन हाउस गैसेस राइट नाउ। ठीक है, इनिशियल टारगेट इन्हें लिया था दैट वी विल रिड्यूस द ओवरऑल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय 5.2% ऑफ 1990 लेवल। राइट, अब वो धीरे धीरे चेंज होते रहे। Post the Kyoto Protocol in 2001, we created Marrakesh Accords. These Marrakesh Accords were created for creation of implementation rules of Kyoto Protocol. ठीक है, कैसे हम Kyoto Protocol को implement करेंगे वो सब बताने के लिए ये बताया। और फिर 2005 में ये सारे implementation rules were then ideally created after various negotiations. So using all those negotiations, the parties in the Kyoto Protocol, they are being divided into 5 types. ठीक है, 5 टाइप के पार्टीज हैं। पहला है NX1 कंट्रीज, ये 43 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड करके। These are industrialized and the developed countries and they have compulsory emission reduction targets. ठीक है, NX2 कंट्रीज वो हैं जो NX1 के पार्ट हैं, लेकिन ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं। They help in climate financing. क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या है? दे विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग ग्रांट्स, एड्स, लाइक लॉस एंड डैमेज में करेंगे, एडेप्टेशन में करेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड में करेंगे। तो ये सब NX2 कंट्रीज, ये मोस्टली मेंबर्स ऑफ OECDs हैं। राइट, इट स्टार्टेड विद 24 पार्टीज, अभी 26 पार्टीज तक ही पहुंचा है। ठीक है, अभी बहुत नॉट ऑल ऑफ देम आर विलिंग टू प्रोवाइड फंड्स फॉर एडेप्टेशन एटसेट्रा, नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग। फिर नॉन NX कंट्रीज हैं जैसे इंडिया एटसेट्रा, which are party to Kyoto Protocol, लेकिन इनको कोई भी, ये developing countries हैं and they do not have any binding target. They have, China is also over, right? And then there are least developed countries or these small island countries which are being created, which have not been given any target. Rather, their adaptation is to be taken care of by all these 3, right? Plus, inside the Kyoto Protocol itself, we have created a flexibility mechanism or flexible mechanism of the Kyoto Protocol. ये Kyoto Protocol में जो flexible mechanism बना है, this has laid down the rules how different types of countries will participate for the climate change and climate change mitigation policies. तो इसमें सबसे पहला है joint implementation. अभी ये ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन क्योटो प्रोटोकॉल आर्टिकल नंबर 6 के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, जिसमें कोई भी एक डेवलप कंट्री दूसरे डेवलप कंट्री में एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, बाय गिविंग अ फंड, राइट, एंड whatever emission reduction would be gained out of it, उससे जो भी emission reduction मिलेगा, that can be taken up as a carbon credit. This is being taken up as carbon credit, जिसको they can sell out to the developed countries. ठीक है, they can sell out to the other developed countries to meet their emission reduction targets जो क्योटो प्रोटोकॉल ने सेट किए हुए। ठीक है, दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म है और ये है आर्टिकल 12 से, क्योटो प्रोटोकॉल का आर्टिकल 12। इसमें कोई भी डेवलप्ड कंट्री किसी एक डेवलपिंग कंट्री में एक प्रोजेक्ट, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट दे सकता है, जिससे एमिशन रिडक्शन होगा। वो एमिशन रिडक्शन को UNFCCC के थ्रू एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन के जैसे हम मान सकते हैं। दैट सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन कैन बी ट्रेडेड ऑल्सो, एंड दिस कैन बी ट्रेडेड in the international market, from developing to developed country, developing to developing country, from country to industry, from country to individual also, this can be sold. ठीक है, जो बनता है कार्बन ट्रेडिंग।
ठीक है. There could be another thing which is being taken up, which is emission trading, which is under the Article 17 of Kyoto Protocol. ठीक है. Under the Article 17 of Kyoto Protocol, carbon credits or carbon trading can be sold, right? Carbon credits or certified emission reduction credits can be sold in the international market, जिससे एक कार्बन मार्केट का फॉर्मेशन हमको करना. This carbon market formation अभी ये कार्बन मार्केट फॉर्मेशन हैज बीन इनटू न्यूज, उस पर मैं डिस्कस कर देता हूं. Carbon trading, right? This is in news. Carbon trading is something where we can say the emission reduction trading is being done at the global level. कोई भी आपने emission reduction किया है, कुछ भी आपने ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए काम किया, उसको एज ए क्रेडिट आइडेंटिफाई करके उसको हम उसको दे सकते हैं जिसका emission reduction टारगेट मीट नहीं हुआ. जैसे अगर एक कंट्री है या इंडिविजुअल है या कंपनी ही है, ठीक है, उसने कुछ ग्रीन एनर्जी बना के अपना जो एक्चुअल एमिशन है वो अपनी बेंचमार्क लाइन से भी कम कर लिया, तो ये जो एमिशन गैप उसने क्रिएट किया है ये क्रेडिट बन जाता है. अभी 1 टन कार्बन इक्विवेलेंट्स को कम करने पर एक क्रेडिट मिलता है. ठीक है. फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसका ट्रेडिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है. ठीक है. अब ये कार्बन मार्केट में ये क्रेडिट जा सकता है या ये जो एमिशन रिडक्शन है ये कार्बन मार्केट में जा सकता है. एंड दिस कैन फंक्शन इन 3 डिफरेंट वेज. नंबर 1, या तो एक मार्केट बेस्ड अप्रोच हम बना सकते हैं कि हमने पुट कर लिया कि ये कार्बन क्रेडिट है, फिर इसको मार्केट में ट्रेड ऑफ करते हैं. जितना ज्यादा कार्बन क्रेडिट का सप्लाई कम होगा, डिमांड जितना ज्यादा होगा, प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा. वो मार्केट बेस्ड अप्रोच है. दूसरा कैप एंड ट्रेड है, जिसमें दी गवर्नमेंट्स, कोई भी एक गवर्नमेंट एजेंसी किसी एजेंसी को एड करती है टू डेवलप द ग्रीन हाउस और द ग्रीन एनर्जी थिंग और द एमिशन रिडक्शन थिंग. नाउ यूजिंग दिस, इफ क्रेडिट इज बीन जनरेटेड तो उसको फिर सेल किया जा सकता है. दिस बिकम्स कैप एंड ट्रेड. देयर इज अ कैपिंग गिवन बाय गवर्नमेंट एंड देन देयर इज अ ट्रेड गिवन बाय गवर्नमेंट. लेकिन इसको गवर्नमेंट एक पॉइंट तक कंट्रोल कर सकता है. कंट्रोल किसको कर सकता है? मॉनेटरी लेवल पे कंट्रोल कर सकता है. ठीक है. क्या पैसा है, कितना पैसा होगा, क्या रेट्स होंगे, क्या मॉनेटरी यूजेस होंगे उसके, उसको कंट्रोल कर सकता है कौन? कैप एंड ट्रेड में गवर्नमेंट. ठीक है. थर्ड है इंसेंटिवाइजिंग और इंसेंटिवाइजिंग रिडक्शन. इसका मतलब क्या है? कोई भी एक डेवलप कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री को कोई ग्रांट, एड या लोन देती फॉर से एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अब उस प्रोजेक्ट से जो एमिशन रिडक्शन हुआ, उस एमिशन रिडक्शन को डेवलप कंट्रीज को देके अपने लोन्स को एडजस्ट किया जा सकता है. ठीक है. उसमें दोनों का विन विन सिचुएशन है. वो एक तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी हो जाता है, इंसेंटिव्स भी हो जाते हैं, लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट भी मिल जाता है डेवलप कंट्रीज को, प्लस कार्बन क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं. तो इस तरीके से कार्बन मार्केट और कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम कैन बी जनरेटेड. और ये कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम स्पेसिफिकली पेरिस अग्रीमेंट के आर्टिकल 6 से आया है. पेरिस अग्रीमेंट जो आगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में 2015 में बना, और उस पेरिस अग्रीमेंट के आर्टिकल 6 से हमको कैप एंड ट्रेडिंग या मार्केट ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केट एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हमको मिला. एंड दिस इज बीन स्पोकन ऑफ इन COP 29 of 2024. This has been added into this, that an amendment can be created and a new chapter is being added where Article 6.2, Article 6.4 and Article 6.8 is being added into Paris Agreement. Article 6.2 speaks about कि हम कोई एक कार्बन मार्केट बनाते हैं. ठीक है. कोई एक मार्केट कंट्री है, दूसरी मार्केट कंट्री, जो आइडेंटिफाइड मार्केट कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, जो कार्बन ट्रेडिंग में पहले से काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कार्बन क्रेडिट्स को क्या कर सकते हैं?
एक्सचेंज कर सकते हैं. दैट इज वन टाइप ऑफ मेथड. आर्टिकल 6.4 में क्या है, एक होस्ट कंट्री है और एक बायर कंट्री है. ये दोनों मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये दोनों किसी तरीके से अपने इंडिविजुअल ट्रेड से भी उसको ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है. या एक नॉन बायर कंपनी है या नॉन होस्ट कंपनी, मतलब जिसने कभी क्रेडिट किया ही नहीं है, और एक कंपनी है जो होस्ट कंपनी है, कंट्री है या कंपनी है जो पहले से ट्रेड करता आ रहा है, उनके बीच में भी ट्रेड हो सकता है. सिंपल. 6.4 बोलता है जो ट्रेड कर रहे हैं उनके बीच में ट्रेड हो सकता है. 6.2 बोलता है, 6.4 बोल रहा है डेवलपिंग के बीच में ट्रेड हो सकता है. 6.8 बोल रहा है एक जो पुराना है और एक जो नया, उनके बीच में भी ट्रेड हो सकता है. ये सब एस्टैब्लिश किसने किया है, ये कार्बन ट्रेड को एस्टैब्लिश करने के लिए आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट फ्रॉम द COP 2024 से ये स्टार्ट हुआ. ठीक है. नॉन मार्केट. Okay, so this carbon trading or method of this carbon trading has been developed by this only, your clean development mechanism only, right? From here itself the carbon market concept started, और फिर वो अभी इवॉल्व होता बीच में बन गया था, फिर ब्रेकडाउन हो गया, फिर बन गया था, ब्रेकडाउन हो गया, and it is now established. तो इससे we have established with the clean development mechanism is being created. Specifically ये clean development mechanism क्या है, developing countries के cope up mechanism के जैसा है, where clean development mechanism में कोई compulsory targets नहीं है, voluntary targets हैं, plus clean development mechanism के through we can bring in incentives, grants, loans from developed countries into developing countries. Clean development mechanism mostly developing countries के लिए, जिसके through we will get aids for all different countries. Majority of the developing countries they have received aids and grants for the development either in terms of technology के फॉर्म में, या ग्रांट और एड्स के फॉर्म में पैसा मिलता है, so that a green energy or cleaner initiative can be taken up by these countries itself, right? Then later on ये सब होने के बाद 2010 में कैनकुन एग्रीमेंट्स बने थे, which itself created कि इसने ये बोला था, अब 2005 में जो बन गया क्योटो प्रोटोकॉल, उसको 2008 से 2012 के बीच में वी हैव एस्टैब्लिश्ड आल्सो अक्रॉस द ग्लोब. रन करके देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल चल पाएगा कि नहीं कंट्रीज में. सो देखा 2010 आते आते तक हमको समझ में आ गया था कि चल नहीं पा रहा, बिकॉज सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई अपना कुछ कर रहा था, कोई अपना कुछ कर रहा था. सो एक डरबन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसने बनाया कि अब 2012 के बाद करना क्या है उसको समझे, और 2012 में दोहा में मिले, दोहा अमेंडमेंट्स बन गए जिसको दोहा राउंड्स बोलते हैं, जिसमें नए सेट ऑफ टारगेट्स बनाए एंड अ न्यू सेट ऑफ मेथड्स वर आइडेंटिफाइड कि हम आगे क्या करेंगे. ठीक है. जो 2015 में बाद में जाके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बना. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बेसिकली दे हैव स्पोकन ऑफ कि हमें वी हैव टू कीप आवर टेम्परेचर इंक्रीज, द एनुअल मीन टेम्परेचर इंक्रीज बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके ऊपर गया तो क्लाइमेट चेंज कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है. सो वी क्रिएटेड अ टारगेट कि हम आइदर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अपने एमिशंस को ऐसे रिड्यूस करें कि हम यहां तक पहुंचना है. ठीक है. ये पहला बात इसने बोला था. दूसरा बात बोला दैट CBDRRC को फॉलो करते हैं. CBDRRC का मतलब क्या है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऑल डिफरेंट कंट्रीज आर नॉट सेम इन देयर कंडीशन. कोई पुअर है, कोई रिच है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है. ये सारे कंट्रीज एक साथ पार्टिसिपेट करें, जो जितना काम कर सकता है वो उतना काम करे. दैट इज CBDR, कॉमन बट differential responsibility. Common है. Common क्या responsibility that we have to look down to reduction of carbon emission reduction. ठीक है. और we have to look down to containing the temperature. लेकिन
कैपेबिलिटीज अलग हो सकती है, ठीक है। सो रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वी हैव टू लुक डाउन टू कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। प्लस what all is being said in Paris agreement, एक चीज और ये बोला कि we have to look down to all those countries which are facing any form of the damage, ठीक है। so loss and damage etc has also been spoken of। 2015 के बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो बाइंडिंग अग्रीमेंट बनने वाला था, क्योंकि इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग अग्रीमेंट नहीं था। 2016 ऑनवर्ड क्योटो प्रोटोकॉल वाज मेड अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, जिसका रैटिफिकेशन पेरिस एग्रीमेंट हो। जो पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई करेगा वो बाइंडिंग टारगेट्स में आएगा या बाइंडिंग कमिटमेंट्स में आएगा। तो वो बाइंडिंग कमिटमेंट्स को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? वो बाइंडिंग कमिटमेंट्स को एस्टैब्लिश करेंगे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सिंपली वो सारे कमिटमेंट्स है जो एक कंट्री अपने एमिशन रिडक्शन के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फेज आउट मैनर में अपने कंट्रीज में एस्टैब्लिश करेगा। ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट 2016 में पेरिस एग्रीमेंट से हुआ, और फिर उसके बाद फॉर एवरी 2 ईयर द कंट्रीज नीडेड टू सबमिट दिस इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। ये इनिशियली इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ठीक है। 2018 ऑनवर्ड्स ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बन गया। जिसने पहला रिपोर्ट किया उसके बाद सेकंड रिपोर्ट ऑनवर्ड ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बन गए, ठीक है। ऐसे 2018 ऑनवर्ड ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब जब यहां से नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एक साथ जुड़ेंगे, सारे कंट्रीज के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एक साथ जुड़ जाएंगे, तो उससे हमको ये पता चलेगा कि कौन सा कंट्री कब कैसे क्या करने वाला है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसने कितना काम किया है और वो क्या काम करने वाला है, इसका एक प्रोजेक्टेड मैप बना लेंगे। 16 में आपने बोला हम ये कर लेंगे, 18 का आउटकम क्या था उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इससे एस्टैब्लिश हुआ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, कि कौन सा कंट्री, एक वेब प्लेटफॉर्म है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कंट्री क्या काम करने वाला, ठीक है। जिससे अल्टीमेटली एक हमारे पास फोरकास्टेड रिपोर्ट बन जाता है। वो फोरकास्टेड रिपोर्ट क्या होता है? ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? इट लिंक्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन विद द ओवरआर्चिंग गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में आपने टारगेट क्या बनाया था और आपने एनडीसी से आपने क्या अक्वायर किया, ये दोनों को कंपेयर करके एक स्टॉक टेक बना लिया। पहला स्टॉक टेक बना 2025 में, अब बनेगा फर्स्ट स्टॉक टेक ओवर हियर, ठीक है। ये पहला स्टॉक टेक होगा। दूसरा स्टॉक टेक 2028 में बनेगा। फिर इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंट्री कब किस टाइमलाइन पे नेट जीरो की कंडीशन में चला जाए, ठीक है। जब ये आइडेंटिफाई आप कर लोगे तो देन यू वुड बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंट्री क्या करने वाला। अभी कंट्रीज ने इसी को कंडीशनल और नॉन कंडीशनल या अनकंडीशनल में डिवाइड कर दिया। अनकंडीशनल का मतलब है that there are no kinds of financial aids which are being given to the countries, इसलिए ये जो भी काम कर रहे हैं ये वॉलंटरी है, इनका एनडीसी वॉलंटरी है। ये जो भी काम करेंगे ये काम चेंज हो सकता है अगर देयर एनडीसीज आर टर्न्ड इनटू कंडीशनल, मतलब इनको अगर किसी तरीके का लोन या ग्रांट एक्सेट्रा मिल जाता है तो इनके एनडीसीज के जो परफॉर्मेंसेस होंगे वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसी के बेसिस पे वी ऑल्सो क्रिएट दी एमिशन गैप रिपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब भी क्रिएट होता है कि कौन सा गवर्नमेंट क्या करने वाला है। ये एनडीसीज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब आया कहां से है? ये सब आया है 2016 के पेरिस एग्रीमेंट से, ठीक है। अभी इंडिया ने भी कमिट किया है इंटरनेशनली, क्या क्या कमिट किया है कि अपने इमिशन रिडक्शन करेंगे बाय 30 to 35% बाय 2030 लेवल फ्रॉम 2005 लेवल को लेकर के। देन वी विल अचीव 60% cumulative electricity power from non fossil sources,
फिर क्या बोला है, अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज बाय एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट, mobilize domestic and new and additional funds from the countries, create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons by forestation. ठीक है, put forward further propagate healthy and sustainable way of living, adopt to climate friendly and cleaner paths and methods and build a capacity to maintain temperature at 1.5 degree centigrade. ये सब लेके 2021-22 में हमने बोला that we will reach up to our net zero by 2070. Net zero would mean that whatever amount of carbon we will put out, the same amount of carbon we will absorb, right? अभी तो ओवरऑल वर्ल्ड का अगर कंडीशन देखेंगे, देन 400 to 500 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट ही बचे हैं फॉर रीचिंग अप टू अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ 2 डिग्री एंड अबव, जिसमें से अभी भी एनुअल ग्लोबल आउटपुट क्या है, 40 बिलियन कार्बन इक्विवेलेंट्स का है ऑलरेडी. सॉरी, ये मिलियन नहीं, बिलियन. ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास कितना बचा है, 10 ईयर्स ही बचे हैं एक्चुअली लेवल, ग्लोबल लेवल पे, कि हम एक सैचुरेशन पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ये जो इक्विवेलेंट्स हैं इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना, ये कम करना पड़ेगा. ये हमारा एमिशन गैप है. हमारा एमिशन गैप, हमको अपना एमिशन रिडक्शन 2030 तक एमिशन रिडक्शन करना है बाय 25 to 40% ग्लोबल, जो अभी सिर्फ कितना है, 2%. और 2040 तक यही बढ़ा के हमको ले जाना पड़ेगा बाय 56%. और अगर हम सारे कंट्रीज के INDCs को जोड़ दें तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप, वो गैप है, हम सारे INDCs को जोड़ दें तो 2050 पे हम खड़े होंगे एमिशन रिडक्शन ऑफ 23% ओनली, जस्ट हाफ ऑफ व्हाट इज डिजायर्ड. ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस एमिशन गैप रिपोर्ट है 2024 का. दिस इज व्हाट इज बीन स्पोकन इस गैप रिपोर्ट में. ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में है, इसको आप समझ सकते हो. दिस ऑल इज बीन डन राइट नाउ. इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग विच इज बीन इनटू न्यूज. ये है आपका एमिशन गैप रिपोर्ट. ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स 1.5 डिग्रीज गोल. 16 गीगाटन कार्बन इक्विवेलेंट फॉर वही ऑन 24 गीगाटन कार्बन इक्विवेलेंट फॉर 1.5, ये रिडक्शन हमको करना पड़ेगा, विच इज नॉट बीन डन राइट. राइट, 42 emission cut by 2030 and 57 by 2035 or 2040. Right, there is only 4 to 10% reduction by 2030 INDCs के अकॉर्डिंग, लेकिन जो नीडेड है वो इतना है. इसलिए ये हमारा क्या है, दिस इज आवर एमिशन गैप. ये डिजायर्ड है यहाँ पे और ये हमारा एमिशन, ये सब हमारा एमिशन गैप है. ठीक है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, और ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरीके से हम एमिशन रिडक्शंस को कर रहे हैं. राइट, इसके अलावा 2016 में ग्लासगो में हम 2021 में COP16 ग्लासगो में मिले थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वी हैव क्रिएटेड अ नेट जीरो कमिटमेंट इन ग्लासगो. ठीक है, और लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ से निकला 2021 से, जो 2022 में वी हैव सीन एज एन आउटपुट ओवर हियर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड. ठीक है, जो कार्बन क्लाइमेट फाइनेंसिंग में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है. इंडिया ने भी 2017 COP 2022 में LT लेड्स लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाया था. मिशन लाइफ बनाया, जो उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए थे. ठीक है, लेड IT समिट लिया था और मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट किया था. ये 2020 में बेंचमार्क था, इसलिए मैंने बता दिया. फिर 2028 में वी हैव आल्सो टेकन अप वेरियस थिंग्स, जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड्स भी लिए हमने, साथ में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेजेस वर क्रिएटेड, ये किया था, और साथ में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भी इनिशिएटिव्स 2023 में हमने लेना स्टार्ट कर दिया. 2024 आ जाते हैं
तो 2024 में हमने बेसिकली क्या क्या किया है, तो हमने अपने क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंस हमको बढ़ाना है। इंडिया ने इसको 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स पे सेट करवाया है अभी, कि इतना फंड मिलना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है जो एक्सपेक्टेड अभी मिल रहा था, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन के लगभग हमको मिल रहा था। तो इसको बढ़ाया है अभी, वी हैव डन दिस थिंग, एंड जिसको बनाया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग ये लॉस एंड डैमेज, अडेप्टेशन, मिटिगेशन सबको करने के लिए लगेगा, यूज होगा। देन वी हैव क्रिएटेड अ ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज इंटेंडेड या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए कंडीशनल अनकंडीशनल को भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल फंड्स भी हुआ। फिर नेशनल एडॉप्टेशन प्लान्स बनेंगे फॉर लॉस एंड डैमेज, मिटिगेशन एटसेट्रा। ठीक है, एंड देन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, ये पहले बार डिस्कस नहीं हुआ, पहले भी हुआ, लेकिन हार्ड स्टेप्स आर बीन टेकन अप फॉर एनी काइंड ऑफ द क्लाइमेट माइग्रेशन इफ इट इज बीन देयर, तो जेंडर न्यूट्रलिटी उस माइग्रेशन में बना रहे, इसको देखना है। देन कार्बन मार्केट मैकेनिज्म्स आर बीन एस्टैब्लिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल 6 है उसके अमेंडमेंट्स करके वी हैव क्रिएटेड कार्बन मार्केट्स का प्रॉपर डेफिनेशन, स्ट्रेटजीज, लेआउट्स हैव बीन क्रिएटेड। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें वी हैव क्रिएटेड इन 2024। इंडिया ने लेड आईटी समिट बढ़ा लिया है 2024 में आके। देन सोलर एनर्जी पार्टनरशिप बनाया है और एसआईडी एडेप्टेशन प्लान बनाया है, विच इज फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए एक एडेप्टेशन प्लान बनाया। ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड एनसीक्यूजी प्रपोजल जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर पे एडेप्टेशंस के लिए फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एस्टैब्लिश करवाया है। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम किया है। जस्ट ट्रांजिशन मीन्स दैट ट्रांजिशन ऑफ द फॉसिल कंट्रीज टू नॉन फॉसिल कंट्रीज मस्ट बी मोर जस्टिफाइड, राइट। एक ग्लोबल स्टॉक टेक को एस्टैब्लिश करने में, उसके डिस्कशंस में हमने हेल्प किया है। एडेप्टेशन को डिफाइन करने में हेल्प किया। वी हैव एस्टैब्लिश्ड एडेप्टेशन इन इंडिया। ठीक है, तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग बेसिकली इज अ मैकेनिज्म जहां पर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इज बीन टेकन अप फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट, नेशनल, इंटरनेशनल, बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल सोर्सेज, जो फाइनेंशियल सोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके थ्रू, and under this we can have various different types of the methods which are being taken up. Either we can have green bonds, which is a type of debt issues by public and private institution to finance any form of the climate related project. Then we can have debt swap also, where agreement between a country is being created for a debt exchange for climate finance related. Guarantees are being taken up by financial institutions for support of climate funds, or concessional loans are being provided, or grants etc are being done. In major climate financing till date 2000 अभी तक till 2024 approximately 62% of the climate financing was more of loans, which was putting and hampering impact over the developing countries. क्योंकि डेवलप कंट्रीज क्या करते थे, लोन्स देते थे, कार्बन क्रेडिट डेवलप होते थे, सारा कार्बन क्रेडिट लेके चले जाते। तो अब आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के पास फंड ही नहीं बचता। ठीक है, देन दे विल अगेन सीक अप कि फिर से आप एक लाइन ऑफ क्रेडिट दे दो, फिर लोन मिलेगा, फिर वही होगा। तो अल्टीमेटली ये सब क्या हो जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग एंड क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी जस्टिफिकेशन रिमेन्स ऑन द मर्सी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये प्रॉब्लम बन जाता है। तो अभी ऑल्दो इंटरनेशनल लेवल पर एडेप्टेशन फंड बना था 2007 में मराकेश अकॉर्ड्स के बाद, COP 7 के बाद, जिसने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कोस्टल मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल मैनेजमेंट के लिए फंड्स दिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, बट सफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, मोस्टली ये फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्सिको, साउथ अमेरिका, अफ्रीका में, इंडिया एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर उसका एडेप्टेशन नहीं रहा। ठीक है, एडेप्टेशन फंड का या बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं रहा। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, विच वॉज $100 बिलियन फंड विच वॉज बीन टेकन अप
राइट, बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। ये 2010 में एस्टैब्लिश हो गया था। इसके अकॉर्डिंग इतने वर्थ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो लेकिन मीटअप नहीं हुआ। इट वाज एन एनुअल $1,000 बिलियन फंड, बट 2025 उसकी लास्ट लिमिट थी कि यहां तक करना ही है पेरिस एग्रीमेंट में। 2025 आते आते तक भी अभी 80 बिलियन वर्थ मिला ही है। सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू मेथड फॉर दैट। दैट्स व्हाई ये जो हुआ है 2028 में 2024 में जो हमने किया है, विच इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल which is being created, new collective quantified goal which is being created. It is being created because of the failure of this green climate fund. ठीक है, इसलिए अब हमने $1.3 ट्रिलियन का फंड मांगा है एनुअल, फॉर नॉट ओनली अडेप्टिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज बट फॉर अडेप्टेशन टू ग्रीनर टेक्नोलॉजी। इट इज नॉट ओनली अभी मिटिगेशन। अब हम मिटिगेट नहीं करेंगे, हम डिजास्टर आया तो सिर्फ उसको संभालते नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी हमको वी हैव टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कि हमारे यहाँ डिजास्टर ही ना। ठीक है, तो उसके लिए अडेप्टेशन के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस थिंग क्लाइमेट फंड। प्लस लॉस एंड डैमेज फंड भी है जो 2022 के बाद एस्टैब्लिश हुआ है। 2021 में एस्टैब्लिश हो गया था ग्लासगो में, 2022 ऑनवर्ड इसके एस्टैब्लिशमेंट है। अभी इसके बारे में भी डिस्कस होना है कि लॉस एंड डैमेज फंड में भी क्या पैसा आएगा। अभी स्टिल ओनली 230 मिलियन US डॉलर्स ही आए हैं इसमें। ठीक है, जो बहुत कम है, बिकॉज कम्युलेटिव लॉस ही अगर हम देखेंगे तो 56 बिलियन का लॉस है 2024 में कम्युलेटिव, बिकॉज ऑफ फ्लड्स, बिकॉज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो ये इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, लॉस एंड डैमेज फंड को। दिस इज ऑल्सो बीन स्पोकन ऑफ। इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, जैसे नेशनल एडेप्टेशन फंड है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है, नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑफ 2014 है। फिर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से हम डिफाइन करते हैं कि हमको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए कैसे फंड मिले, और क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट है 2011 ऑनवर्ड जो हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कार्बन ट्रेडिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ये डोमेस्टिक इनिशिएटिव है जिसमें फॉर ऑल दी इंडस्ट्रीज विच आर मोर एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वो परफॉर्म करें, एमिशन रिडक्शन को अचीव करें और उसको एक ट्रेड आउट करें। इसको ट्रेड आउट करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को नोडल एजेंसी बनाया है। दिस इज ऑल बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एस्टैब्लिश हुआ है, और एक लार्ज स्केल प्रोग्राम बनता है फॉर एवरी गीगाटन ऑफ द कार्बन एमिशन विच इज बीन रिड्यूस्ड। वहां से एक एमिशन रिडक्शन टारगेट एक एमिशन रिडक्शन क्रेडिट मिल जाता है BEE से, जो सर्टिफाई हो जाता है, और जो आगे डोमेस्टिक जो इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जिससे ज्यादा एमिशन हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज को अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को मीट करने में हेल्प मिलती है पैट के थ्रू। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी BEE ने बनाया है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बनाया, जिससे क्या बचत लैंप योजना, सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम, या उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LEDs, उजाला योजना जो है, ये सब बना करके वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड एमिशन रिडक्शन। ठीक है, फिर अभी BEE ने कंप्लायंस मैकेनिज्म बना दिया है 9 सेक्टर्स के लिए, जैसे पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम, क्लोरोएल्कली, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन स्टील, पल्प एंड पेपर एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी सेक्टर। इनको अपना एमिशन रिडक्शन करना ही पड़ेगा, इनको पैट पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वॉलंटरी है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, फॉरेस्ट्री, ये सब वॉलंटरी पे हैं। ये भी कर सकते हैं, पैट को ला सकते हैं और क्रेडिट्स को गेन कर सकते हैं। पैट को और इम्प्रूव करने के लिए अभी 2023 में गवर्नमेंट ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी स्टार्ट किया। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में बेसिकली क्या किया इन्होंने, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बनाया है कि वी विल क्रिएट, ये अभी तक जो था पैट था वो कैप एंड फंड मैकेनिज्म पे था ना, कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म पे था जो पैट था। आपको हमने कुछ एड दे दिया गवर्नमेंट ने, आप करके बताओ और क्रेडिट्स को गेन करो। उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता था कि ये क्रेडिट कहाँ किसके पीछे ट्रेड होगी। ठीक है,
लेकिन अब क्या है, कार्बन क्रेडिट स्कीम में ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे चला जाएगा, ठीक है। अब आप एमिशन रिडक्शन करो, क्रेडिट गेन करो, क्रेडिट को बेचो और फंड को जनरेट करो। ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होगा जिसमें कार्बन, डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट्स जनरेट होंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। इसी में ग्रीन क्रेडिट स्कीम भी है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम में क्या किया है, फॉरेस्टेशन अगर करते हो जिससे उस फॉरेस्टेशन से जो एमिशन रिडक्शन होगा उसके क्रेडिट्स को ग्रीन क्रेडिट्स के जैसे गेन कर सकते हो और उसको यूज किया जा सकता है अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ द डिफॉरेस्टेशन डन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, या कोई भी ऐसे लैंड जहां पर कंपलसरी था लैंड मैनेजमेंट, उन सब में अगर नहीं कर सकते हैं तो ये ग्रीन क्रेडिट्स को यूज करके हम वी कैन क्रिएट एन आउटपुट ओवर देयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैज बीन डन रिसेंटली इन इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बनाया। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का कहना यह है यूरोपियन यूनियन का कि अगर यूरोपियन यूनियन है और कोई भी कंज्यूमर है जो यूरोपियन यूनियन के बाहर का है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, स्पेसिफिकली सीमेंट, स्टील एंड आयरन, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी मैन्युफैक्चरर है, वो यूरोपियन यूनियन के बाहर का है और यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगर वो यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो करता है अपने कंट्री में तो डायरेक्टली सारी चीजों को यूरोप में बेच सकता है। अगर नहीं करता है तो वो पहले डिक्लेयर करेगा उसकी एक्टिविटी क्या है, फिर क्या करेगा, सर्टिफिकेट्स बाय करेगा। कौन से, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स बाय करेगा, किससे, यूरोपियन कंट्रीज से, यानी कि एक टैक्स देगा एक तरीके से, ठीक है, और टैरिफ देगा और फिर यहाँ पर बेच सकता है। सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वुड इंक्रीज, इंडियन प्रोडक्ट स्पेसिफिकली 30 से 40% बढ़ जाएगी, स्पेसिफिकली आयरन, स्टील और सीमेंट, जो इंडियन ट्रेड को हैम्पर करेगी, ठीक है। ये कार्बन कॉन्टेस्ट अभी चल रहा है, स्पेसिफिकली जो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनका इम्पैक्ट होने वाला है, they will have an impact that importers would be impacted, 30 to 40% of their imports would be impacted over here, right? तो ये सब कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो this is also been spoken of CBAM में, जनरल आप अपने बुकलेट पे भी पढ़ सकते हो, right? So all these issues are there in climate change and climate change related aspects. Renewable energy में भी जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह आगे भी पढ़ना है, उसको हम डिस्कस कर देंगे। इससे रिलेटेड जो रिन्यूएबल का जो भी डिस्कशन होगा वो हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। कल के क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। ये 2019 में, अगर आप इंडिया में हो और यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो करते हो, यूरोपियन एमिशन रिडक्शन नॉर्म्स को फॉलो करते हो, आप अपना प्रोडक्ट लो सीधा यूरोप में भेज दो। अगर आप इंडिया में हो और आप यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप डिक्लेयर करोगे कि हम क्या नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उसको सर्टिफाई करके लाओगे, डिक्लेयर करोगे, फिर वहां से यूरोप की कंपिटेंट अथॉरिटी पे जाओगे, उससे बोलोगे कि हमारे प्रोडक्ट में इतना एमिशन गैप है, ठीक है, आपके नॉर्म्स और हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इतना एमिशन गैप है, इसको पुट अप करने के लिए हमें क्रेडिट्स दे, एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट्स परचेज करो। किससे, यूरोपियन यूनियन से परचेज करोगे। वो क्रेडिट गेन कहां से होंगे, यूरोपियन कंट्रीज के एमिशन रिडक्शन से। तो इससे होगा क्या, पूरा फायदा किसको मिल जाएगा, यूरोपियन यूनियन, और एक एडिशनल बर्डन किस पे आ जाएगा, इंडिया। अब इंडिया वाले यहां से चिल्ला रहे हैं कि आप हमको पैसा दो, आपने पहले कोल बर्न किया है, अब एमिशन रिडक्शन करने के लिए आप हमको पैसा दो। तो ये अडेप्ट, अब हमने 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का तो फंड लगा दिया इन पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, इस ट्रेड से पैसा हमारा वापस, तो हमको फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये CBAM तो अभी लगा दिया, 2025 में ही लगा दो, लेकिन ये कब दोगे इसके बारे में कुछ नहीं हुआ, आपका पुराना फंड भी नहीं मिला। अगर हमको यही मिल रहा होता तो हम तो सारे यूरो नॉर्म्स फुलफिल करके आपके पास प्रोडक्ट्स लेके आ जाएंगे, तो हमें एडिशनल बर्डन नहीं होगा। लेकिन आप इसको भी नहीं दे रहे हो और हमसे भी पैसा ले रहे हो, तो डुअलिटी है ना। और आपने आज तक, अभी तक पैसा नहीं दे पाए हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1997 से क्योटो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म बना है, अभी तक नहीं दे पाए, तो डुअलिटी है ना। दिस इज क्रिएटिंग और दिस इज हैम्परिंग द सिचुएशन, ठीक है।